बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। असीं तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम संद में हाज़िर थी चुका आहियूं। आहियां तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी, मूंसां गॾु आहे सदफ़ भुट्टो। सदफ़ भुट्टो ऐं असांजी कचहरी आफ़ियर बि हलंदी रहंदी आहे, आनियर बि हलंदी रहंदी आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं जॾहिं अची वेंदा आहियूं अचानक त तव्हां असांजी गुफ़्तगू ॿुधी सघंदा आहियो। सो इहो स्टाइल आहे, इहो अंदाज़ आहे ऐं लाइव ख़बर कीअं पए त लाइव आहियूं पाण। कीअं न ख़बर पवंदी, हेॾो सारो लिखियल त हूंदो ऐं मां तव्हांखे चवंदी आहियां मूंखे ॿुधाए छॾींदा कयो। लिखियल त हूंदो आहे पर हाणे वरी सफ़ा माना पक थी वई त वाक़ई लाइव आहियूं। सो बहरहाल ख़ैरनि सां अॼु जुमे जो ॾींहुं आहे, जुमे जो बाबरकत ॾींहुं आहे। सभिनी खे जुमो मुबारक हुजे ऐं सुबुह सुबुह सां यकीनन ॿ कंदड़ ऐं चेक कंदड़ जेकॾहिं तव्हांजा चहिरा आहिनि त पोइ तव्हांजो ॾींहुं ॾाढो सुठो गुज़रंदो। जुमे जी नमाज़ खां पोइ अलाह साईं जे हुज़ूर में दुआ कजो मुल्क जी क़ौम जी सलामतीअ जे लाइ, पंहिंजी ख़ुशहाली जे लाइ, पंहिंजे अहलो अयाल जे लाइ ऐं पंहिंजी जेका आहे सा ईअं खणी चऊं त सिंध जे लाइ, उनजे लाइ ज़रूरु दुआ कजो ऐं दुआऊं ज़रूरु अॻंदियूं आहिनि। ऐं मूं किथे ॿुधो आहे त जेकॾहिं तव्हां रब करीम सां राब्ते में आहियो ऐं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेकॾहिं तव्हां यादि कंदा रहो था, पाण सभई हूअं बि यादि कंदा आहियूं, पर इन्हनि सां जेको वास्तो आहे, इन्हनि सां जेको राब्तो आहे उहो असांखे मंज़िल ताईं रसाए थो। ऐं जेकॾहिं पाण इन्हनि सां राब्ते ऐं वास्ते खां कटिजी वञूं था त पोइ पंहिंजो मिसाल सिर्फ़ु ईअं ई आहे जीअं को कटियल लॻड़ो न हुजे, उहो उॾंदो त आहे पर ख़बर न आहे हुनजी मंज़िल किथे हूंदी आहे, किथे न किथे वञी किरंदो आहे बराबरि। सो ईअं किरण खां बहितर आहे त किथे न किथे पाण हथी का थियूं, थानी का थियूं, रब करीम खे रीझायो, उन सां हिकिड़ो वास्तो ठाहियो। ऐं गुरूर ऐं तकबुर वॾाई इहो कुझु बि न आहे, अजाई अना आहे हिन इंसान खे, बाक़ी सभु कुझु फ़ना आहे। सो माण्हू जेकी गुरूर कनि था, जेकी तकबुर कनि था, उहे यकीनन कंहिं न कंहिं ॾींहं ते थेड़ खाईंदा आहिनि, कंहिं न कंहिं ॾींहं ते जेका उन्हनि खे मोट मिलंदी आहे उहा मुस्बत न हूंदी आहे, उनजे करे उहे परेशान बि हूंदा आहिनि। सो बहरहाल गुरूर वारो माण्हू किरे जेकॾहिं न बि तंहिं हूंदे बि तनहा ज़रूरु थी वेंदो आहे। सो गुरूर वारे माण्हू खां सभई पासो कंदा आहिनि। ऐं अल्लाह पाक जी अॼु दुनिया जी सभिनि खां वॾी जेकी नेमत पाणी आहे, पाणी जेकॾहिं न हुजे त इंसान कुझु बि न हुजे, मतिलबु इंसान हुजे ई न। पाणी जी हिकिड़ी सिर्फ़ु जस्ट हिकिड़े पाणी ते जेकॾहिं इंसान वेही सोचे त हुनजी ज़िंदगी गुज़री वेंदी आहे। अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं पाणी जी निगरानी ऐं चकास जे बारे में। अॼुकल्ह जेके असांजा ग़रीब मतिलबु की जेके अंदरूनी सिंध साइड जा जेके माण्हू हूंदा आहिनि या उन्हनि जा ॿार हूंदा आहिनि, कदुरो पाणी पीअंदा आहिनि, उन्हनि खे ख़बर न आहे एतिरो मतिलबु सेंस हूंदे सरांदे बि, या त उन्हनि खे हिन शइ जी फैसिलिटी न हूंदी त असांखे साफ़ु सुथिरो पाणी कीअं पीअणु घुरिजे, पाणी खे साफ़ु कीअं रखणु घुरिजे, इन बारे बि मां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदी रहंदमि। ऐं पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हां पाणीअ सां बि करे सघो था। ॿिए जो मतिलबु इहो न आहे त खाधनि सां या ॿियनि शयुनि सां बि थींदो आहे, पर पाणी इंसान जे जिस्म जे अंदरि अहिड़ी क़ुवत आणींदो आहे जेकी दुनिया जी का बि शइ तव्हांखे ठीकु नथी करे सघे। जेकॾहिं तव्हां बीमार हूंदो आहे त तव्हांखे डॉक्टर चवंदा आहिनि पाणी पीओ, ऐं गुर्दनि खे पंहिंजे फ्रेश करण जे लाइ जस्ट पाणी पीओ। 8 गिलास ॾींहं में 12 गिलास पीअणु घुरिजनि। पर इरशाद जीअं असां गर्मियुनि में त पाणी हूअं बि घटि ई पीअंदा आहियूं, छो जो असांखे हर जॻह ते इहो हूंदो आहे त थधो पाणी कोन्हे, गरम पाणी जे चकर में असां पीअंदा कोन आहियूं। ऐं सियारनि में वरी असांजी पाणी जी क्वांटिटी हूअं ई असांजी घटि थी वेंदी आहे, त असांखे पाणी सियारे में असांखे ओतिरी उञ लॻंदी कोन्हे, त असांखे थींदो बि न आहे त असां पाणी पियूं। पर जेकॾहिं तव्हां पाण पंहिंजे हिसाब सां डेली जे हिसाब सां तव्हां जेकॾहिं तव्हांखे इहो यादि हुजे त मूंखे 8 गिलास या 12 गिलास ॾींहं में, 12 गिलास त मतिलबु वेल एंड गुड थी वेंदो, पर 8 गिलास मैक्सिमम तव्हांजी बॉडी जी डेली जी नीड आहे त तव्हांखे रोज़ाना 8 गिलास पाणी पीअणु घुरिजे। पाणी जे मतिलबु बि ॻाईंदासीं, असांजा मौजूद महिमान बि असां सां गॾु आहिनि, उन्हनि सां बि गुफ़्तगू कंदासीं। पहिरें महिमान जो इंट्रोडक्शन मां कराईंदी हलां। अच्छा ठीकु आहे, भला इंट्रोडक्शन तरफ़ वधो था त ठीकु आहे। जी जी, जेकॾहिं तव्हांखे ॿी का गुफ़्तगू करणी त भली तव्हां कराए वठो। भले असांजे महिमान खे, असांजा जेके व्यूअर्स आहिनि, इंतज़ार चवण वारो हुयुसि त जेके पाणी न हुजे त चांहि में न ठहे आहे, पाणी न हुजे त कुझु बि न ठहे आहे। सो बहरहाल पाणीअ जो इंतिहाई ख़्यालु बि रखंदा कयो। ऐं मौज़ूद जेकी असांजा ॾिसंदड़ आहिनि उनखे गुज़ारिश कंदासीं त पाणीअ ते अॼुकल्ह वॾो मामिलो आहे, वॾो मसइलो पाणी आहे इंसान ज़ात जी बका जे लाइ, सलामती जे लाइ। ईंदड़ जेकी जंगियूं लॻंदियूं, माण्हू चवनि था, ॾाहा चवनि था, अलाह ख़ैरु करे उहे पाणीअ ते ई लॻंदियूं, छो त पाणी वॾो मसइलो करे वियो आहे। ॻोठनि में बि पाण ॾिसूं था त जिते पाणी मिठो हूंदो हुयो, धरती जेका आहे सा उहा समुंड पाए रहियो आहे। ऐं उनखां पोइ समुंड जिते किथे जॾहिं बदीन वारो जेकॾहिं पाण एरिया ॾिसूं, इहो जाती वारो एरिया ॾिसूं त उन पासे समुंड जो पाणी घणो थी वियो आहे ऐं इलाही ज़मीनूं ॿुॾी वियूं आहिनि, त पोइ खारो पाणी उते थी वियो आहे। बिल्कुलु लूण वारो पाणी थी वियो आहे। मिठा पाणी जेके बि आहिनि जिन शहरनि में, उहो मिठो पाणी ख़तमु थी वियो आहे। हाणे ॻोठनि वारा माण्हू बि पाणी परे परे खां भरे करे अचनि पिया। असां कॾहिं कॾहिं सोचींदा हुआसीं त कराची में इहो मसइलो आहे, पर हाणे ॻोठनि में बि सम्झो त कराची वारो मसइलो थी वियो आहे। ऐं कराची में तव्हांखे ख़बर आहे, जेकी कराची वासी असांखे ॿुधनि था, ॾिसनि था, कराची में पाणी जो तमामु घणो मसइलो हूंदो आहे। सो इन जे करे हिकिड़ी गुज़ारिश कंदासीं त पाणीअ खे बचायो
पाणी खे घटि खां घटि यूज़ करणु घुरिजे। मां अक्सर ॾिसंदी आहियां घरनि जे अंदरि नलको खुलियल हूंदो आहे, बसि थांव धोईंदियूं लॻाईंदियूं बि तॾहिं बि नलको खुलियल ई आहे। पाणी जी जेतिरी तव्हां सेविंग कंदव, हिकु त पाणी खे बचाइण, उनजो ज़ाया करणु मतिलबु ज़ाया न कंदव तव्हां, उनजी बचत कंदव, उहो तव्हांखे सवाब बि मिलंदो आहे। पाणी खे ज़ाया करण खां बचाइण में बि तव्हांखे सवाब जो कमु आहे इहो। सही सही। के असांजूं वधियूं भेनरूं ईअं कंदियूं आहिनि जो मतिलबु मोटर खोले करे कपिड़ा बि धोईंदियूं वेंदियूं आहिनि, पाणी हलंदो रहंदो आहे। सो तव्हांखे पाणी केतिरो खपे, केतिरो हुन जो मक़दार हुजे, बाल्टी भरे रखो, उन सां तव्हां जेकॾहिं कमु कंदव त अञा वधीक सुठी ॻाल्हि रहंदी। पाणीअ जो खामखा जो जेको ज़ियान आहे उनखे थोरो रोकियो। पाणी अलाह ताला जी नेमत आहे, ऐं पाणी जेकॾहिं न हूंदो त पोइ असांजी जेका आहे सलामती ऐं बका ख़तरे में पइजी वेंदी। इंसान ज़ात जी बल्कि जेकी बि साह वारियूं शयूं आहिनि, जेकी बि जीवत आहिनि, जानवर आहिनि, पाण आहियूं, सभिनी खे पाणी जी नीड आहे। बेजान शयुनि खे बि, सिर्फ़ु साह वारनि खे न, बेजान शयुनि खे बि पाणीअ जी ज़रूरत हूंदी आहे। तव्हां ॾिसो पत्थर आहिनि, चवंदा आहिनि पत्थर, अच्छा तव्हां इन शइ में ट्रस्ट रखो त पत्थर ज़िंदा हूंदा आहिनि। चवनि था त पत्थर इबादत कंदा आहिनि, है न जी। मां सो बहरहाल अॼु असां कचहरी कंदासीं मुख़्तलिफ़ ॿियनि मौज़ूअनि ते बि। सो जेकी मोज़िज़ महिमान आहिनि, हाणे तव्हां भले हुननि जो तारीफ़ कराइण। जी बिल्कुलु, असां सां गॾु अॼु आहिनि दानियाल जिलानी, गवर्नर नेशनल यूथ असेंबली। कीअं है तव्हां, कैसे आप, ठीक है? असल में हमें उर्दू में वो सिंधी में ही बात करने की आदत है, तो उस वजह से वो हो जाता है, हम समझ लेते हैं, सब समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत बोल नहीं पाते, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह से कि मतलब जैसे समद भाई ने कहा कि थोड़ी सी गुलाबी है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में आए। इन खां सवाइ जेको ॿियो असांजो महिमान आहे, पाण उहे बि स्पीकर आहिनि नेशनल यूथ असेंबली जा। सो हिकिड़ो टाइटल ॾाढो ज़बरदस्त आहे। पहिरियां बि असांजे प्रोग्राम में इन ई यूथ असेंबली जा कुझु महिमान आया हुआ, त मूं चयो पियो त टाइटल ॾाढो ज़बरदस्त आहे। किथे बि जेकॾहिं तारीफ़ कराइजे थो त स्पीकर नेशनल यूथ असेंबली, त माण्हू हाली सोचींदा त अलाए नेशनल असेंबली आहे, यूथ हाली माण्हू ध्यानु न ॾींदा त इहो छा आहे। सो बहरहाल हिकिड़ो दाबो आहे पंहिंजी जॻह ते। सो हिन जो कमु कहिड़ो आहे, छा कंदा आहिनि, इन बारे में पाण अॼु कचहरी कंदासीं। ऐं मीर समद बरोई साहिब बस असां गॾु आहे। भलीकार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है जी, थैंक यू सो मच आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सुठा कलाम, मौसीकी भली ऐं ॾाढी रूह वारी कचहरी। ऐं जेके असांजा व्यूअर्स असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, जेकॾहिं पाणी जे मुतालिक़ या पाणी खे साफ़ कीअं रखणु घुरिजे, पाणी खे सेव कीअं करणु घुरिजे, उनखां अदरवाइज़ उनखां अलावा बि जेकॾहिं को सवाल करणो आहे त तव्हां असांजे प्रोग्राम में सिंध सलामत में कॉल करे शामिल थी सघो था। बिल्कुलु। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे पाणी जी ज़रूरत पवे त पोइ असां लाल खे चवंदासीं ॿ गिलास तव्हां लाइ रखी छॾींदो। मोहरम नाज़ सां मां उहो ई पीअंदी रहंदी आहियां। मोहरम नाज़ खे भलीकार चवंदा। साईं भलीकार, महिरबानी। मोहरम नाज़ लॻे थो नाराज़ छो? न नाराज़ न आहियूं सर, अल्लाह न करे। सफ़ा ओके आहे न कमु? तव्हां जहिड़ा ख़ूबसूरत चेहरा सुबह सां नाराज़गी माशाल्लाह, भली ॻाल्हि आहे। दानियाल भाई, सबसे पहले ये बताएं मुझे कि गवर्नर नेशनल यूथ असेंबली, आपका क्या काम है, ये क्या होती है ये यूथ असेंबली, क्यों मतलब ये यूथ असेंबली बनाने की ज़रूरत पड़ी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिंध टीवी का बेहद मशकूर हूँ कि आपने सिंध के मेमारों को और सिंध के जो सबूतों को आज अपनी स्क्रीन का जीनत बनाया। इसके अलावा जिस तरह आपने पूछा कि नेशनल यूथ असम्बली है क्या, देखें यूथ असम्बली जब लफ्ज़ आता है असम्बली का, तो इसमें हम एक हाका अपने जहन के अंदर बना सकते हैं कि कोई नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली जैसा कोई काम हो रहा होगा। अब देखें, इसका बनाने का मकसद ये था कि जब हमने देखा कि पाकिस्तान में जब तलबा सियासत का अहतमाम हो गया और उसके बाद जो तलबा थे वो इंतशार की सियासत की तरफ चले गए, तो बहुत से तलबा बिखरना शुरू हो गए। और यही वजह थी कि तलबा को किसी एक प्लेटफार्म पे यकजा नहीं किया जा रहा था। जी जी। तो उस वक्त हमने ये क्यों सोचा कि एक गैर सियासी एक ऐसा प्लेटफार्म गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलकर ऐसा बनाया जाए जहाँ पर पूरे पाकिस्तान के तलबा को एक प्लेटफार्म पर यकजा किया जाए और फिर वहाँ पे उनकी सियासी, इक्तिसादी और एक माशरी तरबियत की जाए। क्योंकि आपने देखा कि जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी उस वक्त आपने देखा कि उस वक्त के सियासतदान का जो रवैया होता था, जो रवायात होती थी, वो बहुत डिफरेंस होती थी। और आज के सियासतदान का आप देख लें कि उनकी जो रवायात हैं और जो उनका बात करने का स्टाइल है और जो उनके सियासत का तरीक़ाकार है वो बहुत डिफरेंट हो गया। तो तब हमने नेशनल यूथ असम्बली बनाई। नेशनल यूथ असम्बली एक गैर सियासी प्लेटफार्म है। इसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। ये एक नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर ये चलती है। पूरे पाकिस्तान में बशमूल कश्मीर और गिलगित में हमारा इसके चैप्टर्स हैं। इसको जो सिंध हमारा चैप्टर है इसी तरह से चलता है जिस तरह से सिंध असम्बली चलती है। इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारे तकरीबन 36 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिंध के अंदर हमारे चैप्टर्स हैं और सिंध के तमाम ज़िलाई लेवल पे हमारी तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। तो इसमें हम हमारे 2-3 सेशंस होते हैं। एक हमारा इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, एक हमारे पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं, एक हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं।
جو ہمارا مین چیز ہے وہ پارلیمنٹری سیشن ہوتا ہے. پارلیمنٹری سیشن بالکل جو ہمارا صوبائی پارلیمنٹری سیشن ہوتا ہے وہ سندھ اسمبلی میں ہوتا ہے, اور جو ڈسٹرکٹ لیول کے پارلیمنٹری سیشن ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بتاتے بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نوجوانوں کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو بڑے بڑے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل سے نکل کے ضلع کونسل ہالوں میں اور گاؤں گوٹ تک جو گئے ہیں اور وہاں کے نوجوانوں کو یکجا کیا. اب جو ہمارے صوبائی لیول کا سیشن ہوتا ہے وہ سندھ اسمبلی کے اندر ہوتا ہے, اولڈ اسمبلی ہال میں. وہاں پہ ہم اسی طرح سے قراردادیں پیش کرتے ہیں. ہمارے اسپیکر ہوتا ہے, ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے, اپوزیشن ہوتی ہے, گورنر ہوتا ہے, لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے, یوتھ منسٹرانز ہوتے ہیں. وہ ڈفرینٹ ریزولوشنز جو بھی کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں اس پہ پیش کی جاتی ہے. نوجوانوں کے مسئلے ہوں, اس کے علاوہ جو ہمارے صوبے کے مسائل ہوں, کہ کسی جو ممبر تھا اس کے اگر کوئی ضلع میں کوئی مسئلہ ہے وہ اس کو زیر غور لایا جاتا ہے کہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو صوبائی لیول پہ پیش کیا جاتا ہے. اس کی قرارداد بنا کے وہاں پر پیش کی جاتی ہے, اور پھر تمہارے جتنے سارے ممبران ہیں اس پر بحث کرتے ہیں, اس کے حق پہ بھی بات کرتے ہیں, اس کی مخالفت پہ بھی بات کرتے ہیں. وہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ شعبہ جات سے گیسٹ بلائے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پارلیمنٹری سیشن میں ہم پارلیمانی گیسٹ بنائیں, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹی کے وزیر, مشیران, اپوزیشن سے وہ بھی آتے رہتے ہیں. جی بالکل, ہر سیشنز میں ہمارے ہوتے ہیں. وہ ہماری ڈیبیٹ سنتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک پورا پارلیمانی ماحول ہم وہاں پہ کریٹ کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ہمارا ڈپٹی اسپیکر صاحب کے ساتھ وہ ہماری ایک قسم کی پیٹرن چیف بھی آپ کہہ رہے ہیں, اس طرح سے ہوتا ہے. جتنے اسمبلیز کے جو وہ بل ہم پاس کرتے ہیں ہم وہ ڈپٹی اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کو سبمٹ کرواتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن, اور کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو یہ اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے بل کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی, آن دی فلور وہ اس ٹیبل بھی ہوا. اس کے علاوہ ہمارے کچھ انٹریکٹیو سیشن ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت سے, وہ بیوروکریٹس ہو سکتا ہے, وہ حکومتی نمائندہ کوئی ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ سیشن رکھتے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. جیسے آپ واٹر کی بات کرتے ہیں, واٹر کرائسس پہ ہم نے رکھ سکتے ہیں, کشمیر افیئرس پہ رکھ سکتے ہیں, سندھ افیئرس پہ رکھتے ہیں. ابھی تک جو ہمارے بڑے سیشن ہوئے ہیں وہ سی ایم, گورنر, کور کمانڈ کراچی, ڈی جی ایس پی آر, نیول چیف, ایئر چیف, جوائنٹ چیف, اس کے علاوہ ڈفرینٹ منسٹرانس کے ساتھ, ڈفرینٹ بیوروکریٹس میں کمشنرس کے ساتھ, اس طرح ڈسٹرکٹ کے ڈپٹی کمشنرس کے ساتھ. اس میں ہم ایک ٹاپک رکھتے ہیں اسپیسیفک, اس ٹاپک پہ وہ لیکچر ہمیں دیتے ہیں, اس ٹاپک پہ ہمیں ایک وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ٹاپک کے بارے میں, اسی فیلڈ کے ریلیٹڈ ہم وہ رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد کوشچننگ آنسرنگ ہوتی ہے, اور پھر جو بھی جو اینڈ پہ ممبرانس کے جو تحفظات ہوتے ہیں یا کوشچن آنسر ہیں وہ اس کے آنسر کرتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی ہم ایک شعور پیدا کر رہے ہیں, ایک نوجوانوں کو ایک سیاست کی طرف راغب کر رہے ہیں, اور ہمیں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ ہمارا جو صوبہ سندھ ہے وہ تھوڑا سا اس لحاظ سے سیاسی لحاظ سے بات کرتے ہیں تفصیلی اور تفصیلی. سو نیڑی سائی وٹھوں پہنا ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں بات کو. جی ناظرین, ہلنداسي هڪڙي ننڍڙي کمرشل بریک جي طرف. بریک کان پوءِ جلد واپس था अचूं. महिमान असां सां गॾु आहिनि, जेकॾहिं तव्हां को सुवाल पुछणु चाहियो था असांजे प्रोग्राम में जल्दी कॉल करे शामिल थी वञो. हलंदासीं हिकिड़े ब्रेक जी तरफ़. ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं. असां सां गॾु रहिजो. सलाम सिंध. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. शहानी है अमन जो पैगाम. मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध. जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे वरी कार चऊं था ख़ुशि आमदीद. ऐं तव्हां असां सां गॾु हूंदा आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे. असां अचानक अची वेंदा आहियूं, ऐं अचानक सां जेकी माण्हू ईंदा आहिनि उहे बि सरप्राइज़िंग हूंदा आहिनि. सो बहरहाल अॼु असां सां मुज़ महिमान आहिनि, उहे गवर्नर आहिनि नेशनल सिंध असेंबली और नेशनल यूथ असेंबली जा, ऐं स्पीकर नेशनल यूथ असेंबली मीर समद बरोई साहिबु असां सां गॾु आहे. मीर समद बरोई खां पुछा कयूं था, गैर सियासी ही जेका असेंबली आहे, पर मुंहिंजे ख़्याल में हिते तरबियत समूरी सियासी थिए थी. नवां सियासतदान हितां पैदा थींदा. क्या कहेंगे इस पे? सिंधी तो समझ लेते हैं आप, सिंधी बोलते भी हैं. सभिनि खां पहिरीं त तव्हांजो मशहूरु आहियां कि तव्हां मौक़ो ॾिना आहिनि. स्टार्टिंग मां सिंधी में कया पोइ इंशाल्लाह तव्हांखे उर्दू में कंदासीं. न त बरोई कीअं कयो? ठीकु आहे, बरोई भी घणा आहिनि. सबसे पहले तो जैसे दानियल भाई ने आपको नेशनल असेंबली का पूरा एक स्ट्रक्चर बताया कि हम क्या करते हैं, क्या. मेरे ख्याल में उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, गैर सियासी लफ्ज़ जो है वो इसलिए है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसी जमात का हिस्सा नहीं है या किसी गवर्नमेंट के किसी ख़ास प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करता. हम एक प्योरली एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हमारा काम है
پیور پاکستان کے اندر لیڈرشپ پیدا کرنا. صحیح صحیح. چاہے وہ لیڈرشپ کسی بھی میدان میں ہو, سیاست کے میدان میں ہو سکتا ہے, معاشرت کے میدان میں ہو سکتا ہے, معیشت کے میدان میں ہو سکتا ہے, اقتصادیت کے میدان میں ہو سکتا ہے. جو بندہ اپنی فیلڈ کے اندر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے فیلڈ کے اندر اس گٹس اور اس کوالٹی کے ساتھ چلے جائے کہ وہ کہیں کھڑے ہو جائے تو اس کو لگے کہ وہ ایک لیڈر ہے. صحیح صحیح. تو آج دیکھیں, اگر آپ پاکستان کے اولڈ پولیٹکس کو دیکھیں اور آج کے پولیٹکس کو دیکھیں, بدقسمتی یہ ہے کہ 2002 سے یا 1997 سے یا 1980 سے پہلے کا پولیٹکس اگر اسمبلی کا آپ اٹھا کر دیکھیں تو بہت ہی مہذب, خوبصورت, خوشگفتار اور ایک بہت ہی شائستہ زبان کے ساتھ پارلیمنٹ چلتا تھا. اب آج کا پارلیمنٹ ماشاءاللہ سے آپ اگر کوئی عزت دار شخص اپنی فیملی کے ساتھ جا کر بیٹھے تو وہ بیٹھ بھی نہیں پاتا. تو بنیادی فرق ہے نا کہ کتنا ہمارا ذہنی جو اور اخلاقی وہ ختم ہو چکا ہے کہ ہمارا پارلیمان سب سے مقدس ادارہ جو ہے, جو کہ ملک کو سب سے زیادہ مقدس ترین ہے, اور وہاں پہ جوتے لے رائے جاتے ہیں, وہاں گالم گلوچ ہوتی ہے, وہاں ایک دوسرے کو دھکم پیر کرتے ہیں. یہ پارلیمان کا رواج نہیں ہے. یہ ہم اصل میں پاکستان کو ایک پیور پارلیمانی ماحول دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کو فارورڈ کرنا چاہتے ہیں, دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایک پیور پارلیمنٹری ماحول چاہیے. اس کے لیے ہم جو ہے اس وقت ورکنگ میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹرین ہو تو وہ پکا پارلیمنٹرین ہو, اسے پتا ہو کہ میں اسمبلی میں جا رہا ہوں تو میری ڈیوٹیز کیا ہیں, میں نے لا میکنگ کرنی ہے, میں نے لیجسلیشن کرنی ہے, میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو وہاں ریپرزینٹ کرنا ہے اپنے ملک کو. کیونکہ آپ کے اسمبلی کو پورا دنیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہماری مین فوکس یہی ہے کہ اس وقت جو بھی کریم چلے جائیں اسمبلی کے اندر, کم سے کم یہ ہو کہ وہ وہاں جا کر اس کو لگے کہ کوئی شخص جو ہے تھوڑا بہت سیکھ کر آیا. اور الحمدللہ میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے سیشنز ہوتے ہیں, آپ کے صوبائی سطح کے بہت بڑے بڑے لیڈران ہمارے سیشنز میں آئے ہیں. خدائی قسم ان لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نیشنل اسمبلی اور پروویژنل اسمبلی کے ممبران کو ٹریننگ دے دیں. اس حد تک الحمدللہ ہمیں سکسیز مل چکا ہے. الحمدللہ ہماری تربیت اس طرح کی ہو چکی ہے, ہمیں خود مان لیا کہ ہماری تربیت نہیں ہے بھائی, خود مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں خود کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں ممبر تھا. 4 سال کے لیے یوتھ کونسلر تھا. اختیار تو کچھ تھا ہی نہیں, لیکن بس یوتھ کونسلر تھا. تو اس ٹینور کے اندر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ کہ جس دن میں کھڑے ہو کر میں نے اسپیچ کی ہے, تو اس دن میئر کراچی نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ بھائی میں خدا کے واسطے آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ کم از کم اسمبلی میں آتے ہو, فلور آف دا ہاؤس آتے ہو تو کچھ تیاری کے ساتھ آیا کرو. جیسے یہ آپ سب سے کم عمر میں ہی تقریباً ہاؤس کے اندر سب سے کم عمر ہے, تو کتنے تیاری کے ساتھ آیا ہے, مواد ہے, دلائل ہے, گفتگو کرنے کا ایک انداز ہے. تو ہر ایک پبلک اسپیکنگ ہوتی ہے, ایک ڈیبیٹ ہوتا ہے, آپ کا ایک پارلیمنٹری اسپیچ ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم سکھا رہے ہیں اور اسی پہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. اسمبلی کا بنا ہوا آپ انشاءاللہ, میں تو یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ اگلا سیشن ہمارا ابھی کورونا سے ہم پورے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو گئے تھے, ابھی انشاءاللہ ہم جائیں گے سیشن میں. تو میں انوائٹ کروں گا کہ آپ دونوں کو ضرور رہیے گا. کورونا کی وجہ سے ڈسٹربنگ زیادہ ہو گئی. ہاں نہیں, پریس گیلری میں نہیں, آپ کو گیسٹ میں ہم بھی آئیں گے, گیسٹ میں آپ لوگوں کو بلا لیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بیٹھیے گا اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور صحافی بہت آتے ہیں ہمارے پروگرام میں, تو یہ ہمیں خوشی ہے. اچھا دانیال بھائی, یہ جو ریزولوشن پاس کرتے ہیں آپ, تو اس پہ عمل درآمد کس طرح سے ہوتا ہے, یہ میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن پہلے ایک کالر ہے. جی کال اٹھو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. متی چالا چالو ہے کتھا کال کئی ہے تمام سر ادھی زاہد علی لانگا میرپور ماکلو ضلع گوٹ کی جی سائیں کیر پہ گلایو. جی زاہد علی لانگا ضلع گوٹ کی کا میرپور ماکلے کا گلایا. سائیں کی آیو سائیں, ٹھیک آیو, خیریت سان سائیں اللہ کرم پنجو بدھايو جو خیر خوش ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک سائیں. ته ڏيو حال احوال, پروگرام ڏسو پيا, ڇا چوڻ چاهيندو؟ جی پروگرام ڏسون پيا, تمام تان جو بهترين پروگرام ہے سر. اسان جو چوڻ جو کہ اسان جي میرپور ۾ ऐं گوٽڪي ۾ جی سائیں سی جا جو نا گھڻا کيس ظاهر ٿين ٿا ۽ مونکي پاڻ کي بि آهي هيپاٽائٽس يا. جی هاणे ان جو کارن اهو आहे کہ مانا یا اسان جو پاڻي صحیح نہ ہے, یا هتي مانا جيتري بھی صفائي رکھون ٿا اسپتال ويا اتي بھی جو پاڻ مانا ٻ-ٽي دوايون ڏين ٿا جو هيڏي پرچي لکي ڏين ٿا بچي اها اسان وٽ دوا نہ شهر ملدي. اچھا اچھا صحیح 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 صحیح. جی اهو کو تا انت چھا ٻڌندو یا کو تا سٺو ڊاڪٽر کیا مانا يو ويا ٹھیک ہے. ٻڌاي ماں دانیال جلانی کھا یہ سوال تمام جو مگایا تھی. ٹھیک صحیح ٹھیک, بڑی مہربانی لکھ تو رضائی مہربانی کال کرنے سے لہسن پروگرام میں. اچھا دانیال, ابھی جو ہمارے کالر تھے ان کا یہ سوال تھا کہ جیسے ہم گاؤں ٹائپ میں گاؤں کی جگہوں پر ہوتے ہیں, وہاں پہ اتنی صفائی رکھنے کے باوجود بھی صفائی ان کی کیا ہوگی کہ بھئی نہا لیے دھو لیے, اپنی صاف صفائی لے کر رکھ لی. ایڈس اور آج کل آپ کو پتہ ہوگا شاید اسکن کی ایک پرابلم چل رہی ہے, چھوٹے بڑے بچوں کو دانے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ ایڈس کا کہہ رہے ہیں, ایڈس کو ہم گاؤں میں ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, کس طریقے سے روک سکتے ہیں, کیا کریں ہم ایسا؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں کہ اس میں تھوڑا سا, لیکن ایک اوپینین جہاں سے ہم نے جو مشاہدہ کیا
मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा एक आपको ना अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, बताना होगा कि एड्स फैलता किस तरह से है, उसकी एहतियाती तदाबीर क्या क्या है। देखेंगे ज़्यादा कचरा इकट्ठा ना करें। अब हम देखते हैं बाज़ औक़ात हम गाँव जाते हैं तो लोग नाली में से कचरा निकाल के एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसमें से पानी मिक्स हो जाता है, फिर वही पानी हम पीते हैं। तो ऐसी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं कि जिसकी वजह से एड्स का मैं समझता हूँ कि फैल सकता है। मैं इस पर मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि इस पे उनकी कोई रिसर्च होगी या अगर नहीं है तो वो करें और इस पे बताएं कि एड्स की सही। तो मैं बात कर रहा था कि करारदाद जो आप पास करते हैं, तो वो करारदाद मतलब वो एक नमूना होता है करारदाद का, या उस पर अमल दरामद भी होता है? नहीं, देखें हम सबसे पहले भाई हमारा जो काम है, हमारा बेसिकली काम है कि अपने हिस्से की शमा वो कहते हैं ना जला देना, आगे उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, जहाँ तक आपने बात की नमूना नहीं होता। जी मैं आपको करारदाद की अहमियत क्या है असेंबली में? जी मैं उस पर आपको जैसे कि मैंने आपको पहले भी किया कि हम वो स्पीकर और सेक्रेटरी साहब को सबमिट करवाते हैं। उस पर आज तक हमारे तकरीबन स्टूडेंट यूनियंस पे जो हालिया था कि स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए, इसकी करारदाद हमारी हुई। चाइल्ड अब्यूज़ पे हमारी जो करारदाद थी कि जो छोटे बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, वो हमारे माहौलियात के ऊपर हमने मुर्तज़ा वहाब के साथ बैठ के एक अच्छी डिबेट की, उस पर एक रेजोल्यूशन थी, वो भी टेबल हुई। इस तरह मैं नेशनल लेवल की बात करूँ तो हमारी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने डिमांड्स रखी नेशनल असम्बली के अंदर, उसके फिर हमने इलेक्शन कमीशन के साथ काम किया। फिर इलेक्शन कमीशन के जब उधर से बिल पास हुआ, हमने फिर नेशनल असम्बली में उसको बिल पास कराया। वो हमने डिमांड रखी कि जिस तरह वुमेंस की रिज़र्व सीटें हैं, टेक्नोक्रेट की रिज़र्व सीटें हैं, लेबर्स की रिज़र्व सीटें, इस मुल्क का जो एक एहसास है जो 60% इस आबादी पर नौजवान मुश्तमिल है, उसके लिए भी आप कुछ रिज़र्व सीट्स रखी जाएँ। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो सिर्फ नौजवानों को मेरा ख्याल है जिंदाबाद और मुर्दाबाद तक महदूद रखे। अब अपने किसी भी वर्कर को टिकट दें लेकिन नौजवानों को आगे लेके आए। ठीक है, तो उसमें हमने फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने यूसी लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मेट्रोपॉलिटन लेवल पे हमने यूथ काउंसलर का इम्प्लीमेंटेशन किया। उस पर एक बाकायदा कानून बना और पूरे पाकिस्तान पे अमल दरामद हुआ। इस तरह से प्राइज़ बॉन्ड्स का जो स्टूडेंट प्राइज़ बॉन्ड्स थे उसका किया। स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए हमने रेजोल्यूशंस पास की। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप्स प्रोग्राम शुरू हुआ था, उसके लिए हमने रेजोल्यूशन वो पास की। इस तरह की बेशुमार रेजोल्यूशंस हुई। उसके अलावा जो हमें अमली तौर पर कामयाबी ये मिली कि सबसे पहले जब इस इलेक्शन की मतलब केयर टेकिंग गवर्नमेंट बनी 2013 में, तो हमारे KPK के जो गवर्नर थे उनको केयर टेकिंग सेटअप में मिनिस्ट्री दी गई। 3 मिनिस्ट्री से नवाजा गया 3 माह के लिए जो केयर टेकिंग सेटअप होता है। इस तरह से अभी गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो अभी वहाँ पे केयर टेकिंग सेटअप है। तो वहाँ पे हमारा एक जो हेड थे यूथ गवर्नर और एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, यूथ फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको केयर टेकिंग में गिलगित का अभी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। ठीक है, और जो यूथ गवर्नर थे उनको इंफॉर्मेशन और सियाहत का भी मिनिस्टर बनाया गया। मतलब कि अभी हम एक अमली सियासत में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। इस तरह से बेशुमार रेजोल्यूशन है। इस तरह से मीरपुर सबसे बड़ी, मैं आपको सिंध की अभी हालिया मतलब मिसाल देता हूँ कि हमने मीरपुर ख़ास यूनिवर्सिटी के लिए मीरपुर ख़ास में हमने एक सेशन किया। उसमें हमने वहाँ के स्टेक होल्डर्स को बुलाया, कमिश्नर्स को बुलाया, मिनिस्टरान्स को बुलाया, वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको बुलाया। तो वहाँ पे एक हमने अच्छी डिबेट की। आज मुझे याद है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल मीरपुर में कि हमें मीरपुर शहर मीरपुर ख़ास एक डिवीज़न है, उस डिवीज़न में यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हमें उस डिवीज़न में यूनिवर्सिटी चाहिए। तो वो एक तहरीक बनती गई और आज देखेंगे सिंध असम्बली से वो रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश हुई, नुसैर अब्बासी ने पेश की। स्कॉलर है हमारे साथ, पहले बात कर लेते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी साईं केर पे ॻाल्हायो बा? अदामा गुलाब रहमान ॻाल्हायां। किथां कॉल कई है तव्हां? दुबई मां थी। दुबई मां कॉल कई। वाह वाह साईं, छा हाल वाला? दुबई में छा वक्त थियो आहे? टाइम केड़ो थियो आहे पहिरियों इहो ॿुधायो। टाइम? हां, टाइम 8:41। 8:41 थिया। वाह वाह साईं, असां टाइम वधी वियो आहे साईं, 9 खां मथे ऐं पाण जेको आहे सो दरे घटि जेको आहे सो 10 जे क़रीब आऊं। जी, प्रोग्राम में छा चवण चाहींदो तव्हां? प्रोग्राम असां ॾिसूं था पाणी जी जिथे किथे खोट आहे, माना पाणी जिथे किथे पूरो न आहे। एॾे दुबई में मसलो आहे पाणी जो?
पाणी जो करे मसलो आहे पानी न मतलब दुबई में तो माण्हू तकरीबन खरीद कर ही पीना। पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जो पानी खरीद करके, यहाँ तक कि इवन मैं भी, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं कि जब मैं घर का पानी पीती हूँ तो मुझे सूट नहीं करता है, और जब जैसे मैं बाहर से खरीद के पानी पीती हूँ वो मुझे सूट भी करता है, और उससे ऐसा मुझे फील होता है कि मेरी प्यास बुझ गई। अच्छा समद, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। अभी जैसे दानियल ने कहा कि छोटे बच्चों की जो मतलब उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ गलत ही चीज़ें होती रहती हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए आपने क्या सोचा? जैसे अभी मैं अपने बारे में मैं बैठी हुई सोची थी, इनकी बातों में खो गई थी। जब हम लोगों का बचपन था, मैं समझती हूँ हम चारों हम उम्र ही होंगे आगे पीछे, तो हम लोगों को बड़ी बड़ी लड़कियों के साथ, बड़े बड़े लड़कों के साथ आराम से साइकिलिंग कर रहे हैं, हम स्कूल में साथ पढ़ रहे हैं, कोचिंग साथ पढ़ रहे हैं, खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, और इतने बड़े बड़े होने के बावजूद भी खेल रहे होते थे, रातों को देर से आ रहे होते थे। उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी, और हमारे दिमाग में भी नहीं होता था कि इसको फंसाना है, इसके साथ चक्कर करना है, या उस अंकल से डरना है। अपने बाप से, अपने भाइयों से इतनी हमारी मोहब्बतें होती थी, और उन्होंने कभी भी किस तरीके से भी हम पे इस तरीके की वो सख्तियाँ नहीं की, जो आज 2 साल की बच्ची को भी हम बाहर जाने से कहते हैं बेटा बाहर नहीं जाना है, जो मांगना है आपको घर में हर चीज़ मिलेगी, आप बाहर नहीं जाओगे। बच्चों का बचपन ही बाहर गुजरता है, खेल कूद के गुजरता है। इस चीज़ को रोकने के लिए आपने क्या कोई चीज़ें सोची? हाँ देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जैसे कि किसी के हवाले से, कोई रोकथाम के हवाले से हमारे पास कोई सच कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम कोई ऑर्डर करें वो हो, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारे हाथ से जो भलाई हो सकता है हम करें। इस हवाले से हम यही कर रहे हैं कि हम लोगों को तरबियत की तरफ ला रहे हैं। देखो आज आप जो बात कर रहे हैं ना कि आज हमारे ये एज के लोग थे तो उनको कोई मसला नहीं था। मसला ये है कि हम अगर अपने पुराने ज़माने में चले जाए तो कम से कम हमारे ज़िंदगी के अंदर इक़दार, सकाफ़त, इखलाकियात और इस्लाम का एक बहुत बड़ा चैप्टर था। लेकिन आज हमारे जो फैमिलीज़ हैं, या हमारे आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, या हमारे अक्सर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लिबरलिज़म की तरफ हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, तो बुनियादी वजह यह है कि हमने ख़ुद चीज़ों को ख़राब भी किया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें फिर से अपनी सकाफ़त पे आना पड़ेगा। हमारा सकाफ़त मोहब्बत वाला है, अमन वाला है। लगता है कि आप जिस ड्यूरेशन पे खड़े हैं, आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको कभी कामयाबी होगी? ज़रूर। देखें, अगर कोई शख्स समझता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ इसमें मुझे नाकामी होगी तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमें पता है, हम जब खड़े हुए थे यहाँ पे सिंध के अंदर, हम तकरीबन मेरे ख्याल में 4-5 लोग थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के 36 यूनिवर्सिटियों में, सिंध के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, सिंध के तमाम डिवीजन में हमारी कैबिनेट है। और आज हमारे साथ हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम जी कम कर दे, टीवी जो वॉल्यूम घट करे छो, बंद करे छो बोल के। जी बिल्कुल टीवी जो बता तव्हांजी कॉल ड्रॉप थी वेंदी। साईं केर पे ॻाल्हायो? हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, केर पे ॻाल्हायो साईं? सर ने सारा मन जमाली फराम नवाब खाने से ले सर। नवाब शाह माशाल्लाह। छा हाल वाला खुश आयो? तबीयत ठीक है सर? खैर अलहमदुलिल्लाह दुआ है तमाजी सर जो है तो पुछने जो पास दानियाल बिनाई साहब का जी असा अपने डिवीजन नवाब शाह नेशनल यूथ असेंबली के इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बाकायदे जो पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन होंदी है जो पास सोशल वर्क कंदी है। अच्छा उनके लाइ थोरो असांखे जेको आहे सो मतिलबु सपोर्ट बि खपे पई, उनजे लाइ थोरो असांखे जेको आहे सो कमु मतिलबु कुझु खपे पियो, त थोरो प्रोसेस असांखे ॿुधाइनि त इहो कीअं थींदो? अच्छा ठीक है। जी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा दानियल, उनका मैसेज आपके लिए था कि वो चाह रहे कि हम तो कौन से शहर से कॉल की? नवाब शहर से कॉल की थी। वो चाहते हैं कि हम आपकी टीम में शामिल हो, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। उनकी कोई टीम है, कोई उनको सपोर्ट चाहिए। हाँ जी, इसमें नवाब शाह में हमारा एक मजबूत चैप्टर है। नवाब शाह जो शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न है उसमें कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में भी हमारा चैप्टर है, डिपार्टमेंट लेवल तक हमारी टीम है। इसके अलावा शहीद बेनज़ीर भुट्टो में भी हमारा चैप्टर है। इसके बाद एक लॉ कॉलेज है, मुझे उसका अभी नाम नहीं ज़हन में है, उसमें भी हमारा चैप्टर है। हमारे नवाब शाह फेसबुक पे आप जाएंगे, या हमारा एक लिंक है www.nya.com.pk, आप उस पर जाके ऑनलाइन अप्लाई करें, या फेसबुक पे हमारे पेज बने हैं नेशनल यूथ असम्बली सिंध, आप सर्च करेंगे, नेशनल यूथ असम्बली लिखेंगे, नेशनल यूथ असम्बली नवाब शाह लिखेंगे, नेशनल यूथ असम्बली सांगड़ लिखेंगे, या नेशनल यूथ असम्बली वो सब कुछ आएगा। वहाँ पे आप मैसेज करें, अपना कॉन्टेक्ट हमसे करें तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे छा क्राइटेरिया छा है, मतलब कीअं वो अची सके तो माण्हू तव्हांजी यूथ असम्बली में तालीम जो आहे सिस्टम रखियल या जेको भी अचे? देखें, हमारा जो मरकज़ी यानी कि जो हम इस्लामाबाद से अर्ली स्टार्ट में जब वहाँ आते हैं तो वहाँ का थोड़ा सा क्राइटेरिया थोड़ा सा हम हार्ड है। उसके लिए एजुकेशन आपकी तकरीबन ग्रेजुएशन और आपकी एज जो है अंडर 30s के अंदर हो, और उसके अलावा आपके जो के पॉलिटिकल ग्राफ है वो थोड़ा बहुत ऑलरेडी कहीं से आपकी इंगेजमेंट हो,
اور کچھ کویشچنس آنسرز بھی ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے ہماری ممبرشپ دی جاتی ہے. لیکن سندھ سطح پر تھوڑا سا ہم نے ریلیکسیشن رکھا ہے, کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے ہم شہر میں کام کرتے تھے, لیکن ہم ابھی تقریباً یہ 2 سال ہو گئے نکلے ہیں انٹیریئر میں. تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ اب انٹیریئر کی طرف ہم جائیں گے, اگر ہم یہ کہیں گے کہ سارے کے سارے گریجویٹس ہمیں مل جائے تو ناممکن سی بات ہے. ہمارا مقصد لوگوں کے ذہنوں پہ کام کرنا ہے. تو اب ہمیں تھوڑا کرائٹیریا چینج یہ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑھ لکھ سکتا ہے, بول سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, تو ہم اس کو ممبرشپنگ دے رہے ہیں. وہ آئیں, پہلے ہم اس کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے کیبنٹ سیشن اٹینڈ کریں, ہماری میٹنگس اٹینڈ کریں, ہمارے کانفرنس اٹینڈ کریں. جب آپ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بندہ اب جو ہے پوزیشن میں ہے, یہ کام کر سکتا ہے, تو اس کو ہم تعلق کے سطح پر یا یو سی سطح پر یا ڈسٹرکٹ سطح پر یا یونیورسٹی سطح پر کہیں پہ بھی اس کی ایڈجسٹمنٹ کی ہوتی ہے, ہم اس کو. اچھا, ذہنی پوزیشن میں ٹھیک ہے, تعلیم بھی ٹھیک ہے, پر غریب مانو آتا ہے تو اچھی نہ سکے پوزیشن سے انہیں لائق وہ ہے طریقے کار. سر یہ آرگنائزیشن غریبن جو ہے اس میں ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں, کہ کرایہ بھاڑا نہ ہو جائے مسکین بالکل. اس میں دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک چیز ایڈ کروں, بہت سے لوگ بہت سی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلی آرگنائزیشن ہے کہ ہم ہوٹل سے نکل کے بڑے بڑے آڈیٹوریم سے نکل کے نچلی سطح پہ آئے. دوسری چیز کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سی آرگنائزیشن میں ہوتا ہے کہ جی آپ ڈریس کوڈ ہو, آپ کا ویسٹ کوٹ ہو, آپ کی شلوار قمیض ایسی ہو, آپ کی پینٹ شرٹ ہو, پینٹ کوٹ. لیکن ہمارا موقف یہ نہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کسی بھی طرح آئیں, لیکن آپ کا ذہن جو ہے نا وہ ایک باٹ مائنڈڈ ہونا چاہیے اور اس ذہن پہ کام کریں. ہمارے پاس ہم جب جاتے ہیں سیشنز میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں, آپ یقین کریں کہ پھٹے ہوئے کپڑے اور پھٹے ہوئے چپل پہ بھی لوگ آ کے بات کرتے ہیں. ہم مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم گھوٹکی میں ہمارا سرکٹ ہاؤس میں سیشن تھا, اس میں ڈپٹی کمشنر بھی تھے, ایس ایس پی تھے, سردار محمد بخش مہر بھی تھے, جی او سی پنواکل بھی تھے. وہاں پہ ایسے بہت سے لوگ تھے کہ جن کی جو چپل تھی وہ بھی پھٹی تھی, لیکن جب انہوں نے بات کی تو کیا کمال کی بات کی. بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے ویسٹ کوٹس اور ڈریسز کیے تھے ان سے بہت زیادہ کمال تھے. تو ہماری مطلب سمجھ والی بات کہ آرگنائزیشن ہی غریبوں کی آرگنائزیشن, اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹیلنٹ اوپر آئے, ٹھیک ہے. اور ٹیلنٹ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, نہ وہ غریبی کا محتاج ہوتا ہے نہ وہ امیری کا محتاج ہوتا ہے. جو ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہ. اچھا ارشد بھائی, آپ نے اس میں عرض کیا کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس کوئی آنا چاہے اس کے پاس کرایہ وغیرہ نہیں تو وہ کیسے. اصل میں دیکھیں ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر تو مینشنڈ ہے کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں وہ اس ادارے کو سپورٹ کریں گے. یعنی ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں رہائش دے, وہ ہمیں سیشن کے لیے ہال دے, وہ ہمیں کھانے پینے کے دے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی تک ڈپٹی کمشنر صاحبان سے ہمیں سوائے ہال کے کچھ بھی نہیں ملا, تو اپنی جیب سے کرتے ہیں. میں اور دانیال اور ہماری ٹیم کے 10-12 لڑکے ہم پورے سندھ وزٹ کرتے ہیں, پورے انٹیریئر میں جا چکے ہیں الحمدللہ. اپنے جیب سے جاتے, اپنا فیول لگاتے ہیں. سمجھو تے اسمبلی ممبران جو تو 4 لاکھ پگار تاں جی کا اصل میں وہ یہاں سے جیب سے جاتے ہیں. کال وٹھوں دا کلب کو کوئی جگہ تے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں کیر پہ ڳالهايو؟ تمام گوبی پہ کمن پہ ڳالهايان. کتھاں کال کئی ہے تمام؟ دبئی میں آتی. دبئی میں کال کئی. تمام کی بھلی کارتکیاں پنجے پروگرام سلام سندھ میں چھا چوڻ چاہیندو؟ صحیح پروگرام میں نائے ॾिठो अलाए छा सुवाल आहे छा टॉपिक आहे उहा असांखे सम्झायो त असां वरी उन हिसाब सां ॻाल्हायूं. मोहबत जो आहे, प्यार जो आहे, पाणी जी कमी आहे ऐं अखियुनि में नमी आहे. अच्छा इहो दुनिया जिते किथे लॻो पियो आहे हा न. یہ مجھے جتے کے سے لگو پہ اچھا. واہ واہ, تاں جی محبت آئے جو تاں ٹی وی تے اساں جے کھے ॾिठو आहे کال کیا سال असांखे तकरीबन वॾी तकलीफ़ सां मिले थी त वरी तव्हांजो डॉक्टर साहिबु खणे बि केॾी महिल नथो, कंहिं महिल कटे छॾे थो. अच्छा वो कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका कॉल करण मजबूर कयो आहे? छा ठीकु आहे तव्हां? साईं ठीकु आहे, महिरबानी लख थोरा तव्हांजा प्रोग्राम जी साईं सम्झ साईं तव्हां ॿुधायो पिया. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جو آپ نے کہا نا اسمبلی کے ممبران کو بڑے بڑے تنخواہیں ملتے ہیں, یہ فلانا فلانا, ہم اپنے جیب سے کر رہے ہیں. جی یہ 3-4 سال سے ہم اس کو ورکنگ میں ہیں تقریباً گراؤنڈ میں. آلریڈی 2015 کے بعد سے ہم تقریباً آلریڈی ورکنگ میں ڈے بائی ڈے, لیکن ہمیں ایکومنڈیشن کہیں سے بھی نہیں ملتی اور ہم لینا بھی نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہیلپ کرے, کوئی منسٹر وغیرہ, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں. بھلا ان میں اساں اچھی سگوں گا نا, اساں ضرور ریکویسٹ ہے. لیکن ایک بات ہے اگر مثال کے طور پہ کوئی بالکل فارغ ہے, لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی منسٹر یا کوئی وزیر یا کوئی عہدیدار ہمیں اسپانسر کرے گا تو وہ چاہے گا تو میری بات ہو. تو یہ مارننگ شو کے بعد کچھ بھی نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ آپ بہت شکریہ, بہت ساری باتیں رہ گئی, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. معزز مہمان اساں ॿिया पिया आहिनि जेकी प्रोग्राम में असांखे थोरी देरि में जॉइन कंदा. जी बिल्कुल. ऐं इन खां पहिरियों पाण हिकिड़ो कलाम बि ॿुधी वठूं. छा ख़्याल आहे तव्हांजो? बिल्कुल, काफ़ी टाइम थी वियो आहे असांखे सॉन्ग मुरम नाज़ जो जीअं न माना ईअं का तकवाड़ ईअं तिखा कबान पंहिंजे साज़नि खे साफ़ ऐं तिखो करे छॾियो आहे. आवाज़ माना VIP अॼु गुड़ बि खाई आयो आहे, मिठो मिठो आवाज़ हूंदो. सो मुरम साईं वाह वाह कजो.
محمد جے محمد جے اساں جی جھولی بھرے چلے خدا صدقے محمد جے سوالی تھی آیا آیوں خدا صدقے محمد جے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد تو بہتائب تھیا آیوں اے مالک تجھے در سبھائی تو بہتائب تھیا آیوں اے مالک ترے تجھے سبھائی کرم کر تو عطا دے خدا صدقے محمد جے صدقے محمد جے اساں جی جھولی بھرے چھڈے خدا صدقے محمد جے اساں جی جھولی بھرے چھڈے خدا صدقے محمد جے سوالی تھی آیا آیوں خدا صدقے محمد جے سوالی تھی آیا آیوں خدا صدقے محمد جے اساں جی جھولی بھرے چھڈے خدا صدقے محمد جے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد شہانی ہے امن جھوٹے پیغام مجھے سن کے سلام سلام سن شہانی ہے امن جھوٹے پیغام مجھے سن کے سلام سلام سن جی ولی کار چند تاں پنج پروگرام سلام سندھ میں ٹیکن سان گڈ ऐं टैक लाज़मी आहिनि ज़िंदगीअ में भली केॾी परेशानी हुजे दुश्मन ते तहिवाण जे लाइ टैक इंतिहाई लाज़मी आहिनि जीअं हिन वक़्तु सदफ़ टैक ॾिए थी पई सो मोटी आयासीं ऐं मोटी अचण सां ई तव्हांखे अख़बार पढ़ी ॿुधाईंदा आहियूं पाण जीजल अख़बार मुंहिंजे हथ में आहे कराची हैदराबाद सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे इहा अख़बार जुमे जो अॼु बाबरकत ॾींहुं भलारो ॾींहुं 18 सेप्टेम्बर 2020 बमुताबिक़ 29 मुहर्रम उल हराम ऐं सिफ़ा 8 क़ीमत इन अख़बार जी 20 रुपया आहे जेका लीड ख़बर आहे अॼोकी अख़बार में उहा इहा आहे त बिलावल भुट्टो जो हुकूमत ते अहम क़ानून ज़बरदस्ती पास कराइण जो इल्ज़ाम चइनी सूबनि खे बराबरि हक़ ॾिना वञनि शहबाज़ शरीफ़ साहिब इहो चवणु आहे ऐं वरी हेठि लिखियलु आहे त नवाज़ शरीफ़ जा ज़मानत न थियण जोगा गिरफ़्तारी वारंट परॾेही सेक्रेटरी खे वणिया विया सो वेल में अची वियो त वरी नवाज़ शरीफ़ ॾिसूं त छा थो थिए हाणे वरी मथे जेका ख़बर आहे सुपर लीड जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं वज़ीर आज़म साहिब जो बयानु आहे त करप्ट माण्हुनि खां मिलंदड़ पैसा तालीम ते लॻाइणु चाहियूं था अंग्रेज़नि जी ग़ुलामी वारी सोच बदिलाइणी पवंदी इन खां सवाइ ॿियूं ख़बरूं बि तमामु घणियूं आहिनि अॼोकी अख़बार में शोबिज़ जी ख़बरुनि ते थोरी निगाह विझूं था त उन में सभ खां पहिरियां पाण पंहिंजी प्रोग्राम जी ख़बर था पढ़ूं कल्ह जेको प्रोग्राम कयोसीं असां लाला अब्दुल हुसैन सारियो साहिब जी यादि में उनखे तमामु घणो सारायो पियो ऐं मूंखे ज़ाती तौर ते बि ॿियनि मुल्कनि खां बि तमामु घणा टेलीफोन आया ऐं उन्हनि चयो त कल्ह को प्रोग्राम ॾाढो ज़बरदस्त अहिड़ा प्रोग्राम थियणु घुरिजनि सलाम सिंध प्रोग्राम में अदाकार लाला अब्दुल हुसैन सारियो खे भेटा ॾिनी वई अॼोकी अख़बार इहा ॻाल्हि बि रिपोर्ट कई आहे ऐं मेडोना पंहिंजी ज़िंदगीअ ते पाण ई फिल्म ठाहिण जो ऐलान करे छॾियो कोई नथो ठाहे त पाण ई ठाहियूं ईअं बि थी थो अथव मेडोना कैरियर दौरान 14 स्टूडियो एल्बम मार्केट में आणे चुकी आहे इकरार अज़ीज़ नोमान एजाज़ खे हलंदड़ फिरंदड़ स्कूल करार ॾेई छॾियो अच्छा जी सऊदी अरब में पहिरीं हजम औरत जी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थी वई आहे हजम औरत आहे हुते सो बहरहाल अॼु अख़बार में ज़रूरी ख़बरूं बि आहिनि रोज़
ऐं नेशनल इंटरनेशनल ख़बरूं, स्पोर्ट्स जूं ख़बरूं, इलाइक़े जूं ख़बरूं तव्हां पढ़णु चाहियो था त पोइ रोज़ानी डिजिटल अख़बार पंहिंजे वेझे हाक रखे तव्हां चई छॾियो, तव्हां ते पहुचाए छॾींदो। ऐं नाज़रीन मां तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां असांजा कुझु महिमान असांखे ॿीहर जॉइन कयो आहे, उन्हनि सां तव्हांजो इंट्रोडक्शन कराईंदा हलंदासीं। उन्हनि जे हिसाब सां बि तव्हां जेकॾहिं असांजे प्रोग्राम में कॉल करे कुझु सवाल करणु चाहियो था, उन्हनि खां कुझु पुछणु चाहियो था पंहिंजे इलाइक़नि जे बारे में, ॿियनि जे इलाइक़नि जे बारे में, उन्हनि तकलीफ़ुनि खे, उन्हनि मसइलनि खे कीअं हल करणु घुरिजे, उन हिसाब सां बि तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे जल्दी पंहिंजा सवाल असांखे कयो ताकी असां तव्हांखे उन्हनि सवालनि जा जवाब ॾेई सघूं। बिल्कुलु बिल्कुलु, जेका पहिरीं शख़्सियत आहे जे महिमान जो तारीफ़ तव्हां सां करायूं था, पाण तमामु सुठा लेखक बि आहिनि। अॼुकल्ह आउं चवंदो आहियां त ईअं खणी चऊं त शाइर तमामु घणा थी विया आहिनि ऐं मसइलनि ते, मामलनि ते, सिंध जे इशूज़ ते लिखण वारा तमामु घटि आहिनि। सो हिन नौजवान जो तमामु घणो काराइतो किरदारु आहे, मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में आर्टिकल्स, कॉलम्स उन नौजवान जा असीं पढ़ंदा आहियूं ऐं तमामु घणी मुल्की सूरत हाल ते गहरी गिरफ़्त रखंदो आहे ऐं ख़ासि तौर ते शाइरीअ जे मैदान में बि भरड़ आहे, पाण मल्हायो अथऊं ऐं पाण वकील बि आहिनि ऐं ईअं खणी चऊं त नौजवान दानिश्वर बि आहिनि, भलीकार चऊं था पाण। सभ खां पहिरियां एडवोकेट अहमद नवाज़ इनकलाबी साहिब खे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? ठीक ठाक, वॾी महिरबानी, लख तौर तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो। ऐं ॿियो जेको असांजो महिमान आहे पाण यूसी नाज़िम बि रहिया आहिनि ऐं यूसी चेयरमैन बि रहिया आहिनि। अॼु असां हिन खां पुछा कंदासीं त हेॾो जेको माल अचे थो वञे कारे थो, इहे सोलर प्लेटूं, इहे पखा, इहे वॉशिंग मशीनूं, इहे कंहिं ग़रीब खे मिलियूं ई कोन। यूसी चेयरमैन खे अलाए काॾे ख़बर न आहे, इहो सॼो हाल वाल हुन खां वठूं था ऐं ख़ासि तौर ते कराची जूं हालतूं ऐं कराची पैकेज ते बि हुन सां ॻाल्हाईंदासीं, कचहरी कंदासीं। ऐं इन शख़्सियत जो वरी हिकिड़ो ॿियो किरदारु बि आहे त हैदराबाद में जेको डेयरी जो कमु आहे उहो ख़ासि तौर ते उन्हनि जा बि पाण ईअं खणी चऊं त अहम किरदारु आहिनि ऐं उन्हनि जो वापार बि हिकिड़ो आहे, खीर जे हवाले सां कचहरी बि कंदासीं। भलीकार चऊं था मंठार अली दतोई साहिब खे। साईं अस्सलाम वालेकुम। ख़ुशि आहियो? वॾी महिरबानी, लख लाइक़ तव्हां असांजे प्रोग्राम में आहियो। ऐं असांजो टियों महिमान आहे हिन लम्हे असांखे जंहिं जॉइन कयो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सीनियर अॻुवाण आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे रिप्रेज़ेंट कनि था। मुख़्तलिफ़ मामला, मुख़्तलिफ़ मसइला पाण उन्हनि सां डिस्कस कंदा आहियूं ऐं तमामु गौर फ़िक्र सां, गौर वीचार सां ऐं सुठी तर्ज़ निगारी कंदा आहिनि पाण। अॼु के प्रोग्राम में असां सां गॾु आहिनि भलीकार चऊं था प्यारे साईं नईम अहवान साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम। नईम भाई कैसे हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। आपको, आपकी टीम को, पाकिस्तान में पूरी दुनिया को आज के दिन जुमा मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऐं मोहरम नाज़ पाण सां अॻु में ई हुयो, उहो साॻियो पैकेज में आहे। सो बहरहाल इनकलाबी साहिब खां शुरूआत कयूं था। साईं, कहिड़ो इनकलाब अचे पियो, छा पिया कयो अॼुकल्ह, कहिड़े मौज़ूअनि ते लिखो पिया, आवाम खे कहिड़ी जागरता ॾियो पिया? ॾाढी महिरबानी। इशूज़ इलाही आहिनि, पोइ पाण ॿुधायो त कहिड़नि इशूज़ ते कमु कयो था? इशूज़ त सॼी सिंध इशूज़ लॻी पई आहे। हींअर त जेको बारिशूं पयूं त सॼी सिंध तक़रीबन बुॾल नज़र आई असांखे। ख़ासि तौर ते जेको हूअं त थर वारा चवंदा आहिनि त असांखे जेको आहे बारिशूं थिए पए, हिन दफ़े थर वारो इहो पासो बि असांखे बुॾल नज़र आयो। उन्हनि में चयो त एॾी बारिश बेनता बारिशूं पियो। असांजो सांगड़ ज़िलो, मीरपुर ख़ासि जेको बि आहे डिवीज़न आहे उहा, इन में तमामु घणो जेको आहे उन्हनि जो नुक़सानु थियो आहे। ऐं उन सां गॾु जेको आहे ज़रई हवाले सां जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं त हिन वक़्तु जेका आहे फुटी जो जेको फ़सुलु आहे उहो तमामु घणो जेको मुतासिर थियो आहे बारिशुनि जे करे। ऐं उन खां पोइ वरी जेका आहे अछी मख जेका आहे उन जो बि घणो जेको आहे बारिशुनि खां पोइ हमिलो थियो आहे त हारियुनि खे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। त इन हवाले सां उहो जेको आहे उहा रिसर्च आहे त उन्हनि खे जेको आहे अवेयर कयूं त उन्हनि खे बि मुशार कयूं त पंहिंजे फसलनि जो, ऐं हुकूमत खे बि इहो चऊं त बाबा हाणे जेको एॾो सारो नुक़सानु थियो आहे कुझु उन्हनि जे लाइ पैकेज ॾियो, उन्हनि खे को रिलीफ ॾियो। अॻु पहिरीं जेको आहे हारी तमामु घणा उहे कर्ज़नि में बुॾल आहिनि, त इन हवाले सां कमु हले पियो। सही सही, माशाल्लाह। सो मंठार साहब सां मां हिकिड़ो सवाल कयां? जी जी, तव्हां ॿ सवाल कयो, कुझु था कयो। मंठार साहब तव्हां कीअं, तबियत सही आहे? अल्लाह सही आहे, करम आहिनि, अल्हम्दुलिल्लाह। उहो ई जेके हाणे सॼी डिस्कस हले पई, इरशाद बि चयो त एतिरा सारा पैसा तव्हांखे मिलिया न मिलिया, काॾे विया, ऐं हिन वक़्तु जीअं त तव्हां ॾिसो था कराची जा हालात कीअं लॻा पिया आहिनि। कराची खां अलावा बि अंदरूनी सिंध में बि वञो, जॾहिं बि माना क़ुर्बानी जे जेके ॾियारा वेझा ईंदा आहिनि, उनजे जेके पेठा गंदगी, उन खां अलावा वरी उन ते वरी जेके मखियूं वेहनि थियूं, जीअं असांजे भाउ ॻाल्हि कई, त उन सां वरी जरासीमूं बीमारियूं अञा वधंदियूं थियूं वञनि, माण्हू ॾींहं ॾींहुं पोइते थो थींदो वञे। ऐं जेकी तरक़ी का दफ़े सोची वेठा हूंदा आहियूं त पीपल्स पार्टी खां जेके असांजी उमेदूं आहिनि उहे छो ईअं पोइते रहिजी थियूं वञनि, इन जी आख़िर वजावत छा आहिनि? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तव्हांजी महिरबानी, तव्हां असांखे दावत ॾी घुरायो, असांखे मौक़ो ॾिनो त असां ॿुधायूं। मां यूनियन काउंसिल जो पहिरीं नाज़िम रहियो आहियां हैदराबाद में, हींअर रिसेंटली चेयरमैन तां ख़तमु थियो असांजो टेन्यूर ख़तमु थियण जी तव्हांखे मुबारक ॾियूं, छा चऊं? मुबारक सुठी ॻाल्हि, ख़ैर सां थी वियो। जी जी साईं। असल में असां वटि मसइला इलाही आहिनि, काफ़ी मसइला आहिनि, पर हल थियण जोॻा आहिनि, थी सघनि था जेकॾहिं असीं सभु चाहियूं
जेको ही गंदगी आहे या जेका तव्हां मुसीबतूं परेशानियूं इहो इंफ्रास्ट्रक्चर इहे गटर इहे कचिरो जेका तव्हां ॻाल्हि कई इहे सभु हल थी सघनि था। इन्हनि जो जेको वजह आहे उन जे असां सभु ज़िम्मेदार आहियूं उन्हनि शयुनि जा। मां बि ज़िम्मेदार आहियां, वोट वठण वारा बि वोट ॾियण वारा बि, ऐं असांजा जेके बि माण्हू सोसाइटीज़ में जेके आहिनि शहरी आहिनि उहे सभु असां ज़िम्मेदार आहियूं। हिकिड़ो त वॾो असां वटि अज़ाब आहे, करप्शन तमामु घणी आहे। यूनियन काउंसिल हालांकि हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थो यूनियन काउंसिल जो हिसाबु किताबु। यूनियन काउंसिल में हर यूसी खे 5 लाख मिलंदा हुया, पोइ उन मां तक़रीबन 1.5 खां 2 लाख रुपया पघारूं वेंदियूं असांजूं। तक़रीबन 3 खां 3.5 लाख रुपया यूनियन काउंसिल में बचा पए। यूनियन काउंसिल तमामु नंढी आहे, 3.5 लाख रुपया ठीकु आहिनि, भला ॿियो असां कुझु नथा कराए सघूं त हुन में सफ़ाई सुथराई त कराए सघूं था, नंढा वॾा कम थी सघनि था। पर उहा ई ॻाल्हि वरी मां तव्हांखे ॿुधाई त माण्हू सुठा नथा अचनि। माण्हू सुठा नथा अचनि, असांखे असांजे माण्हुनि खे इहो अवेयर करिणो पवंदो त ख़ुदा जे वास्ते चङा माण्हू आहियूं, उहे हरामखोर मवाली उहे जेके पैसो खाई था वञनि, तव्हां उन्हनि खे वोट ॾियो था, वरी उन्हनि खे गारियूं था ॾियो साॻियो। अच्छा मंडार सर मूंखे ॿुधायो यूनियन जो जेको फंड तव्हांखे आराम सां यूनियन काउंसिल जो फंड आराम सां मिली वेंदो तव्हांखे, या उन्हनि में बि तव्हांखे इलाही मुश्किलात करणी पवंदी? कोई मुश्किलात न आहिनि। यूनियन काउंसिल जो फंड यूनियन काउंसिल जे चेयरमैन जे खीसे में आहे। अच्छा, इहो तव्हांखां ॿुधाए छॾियां। सही, इहो आऊं इन सॼी सिंध जे माण्हुनि खे ॿुधायां थो त यूनियन काउंसिल जो फंड यूनियन काउंसिल जे चेयरमैन जे खीसे में आहे। हुनजी मर्ज़ी आहे ख़र्च करे आवाम ते या खाई वञे, हुननि खां केरु पुछण वारो कोन्हे को। अच्छा, हा इहो त आहे, ऐं कोई नथो पुछे। सही, इन में हिकिड़ी तजवीज़ आहे त इन में असांजे जेके माण्हू आहिनि जेके वोट ॾियनि था उहे छो नथा पुछनि यूनियन काउंसिल जे चेयरमैन खां? छो नथा पुछनि त भई हे तो असांजा पैसा आया, ही 5 लाख रुपया महीने में तोखे मिलिया, काॾे विया? उन्हनि खे हिमत कान्हे का? दाऊं छाजे लाइ था कनि? इन ते पाण कचहरी कयूं था। अञा पीपल्स पार्टी जो मेंबर असां सां गॾु आहे नईम आवान साहब। नईम साहब मुझे बताइएगा कि कल एपीसी माशाल्लाह से हुई, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो साथ नज़र आए, तो ये बातें ख़ास तौर पर अपोजिशन और हुकूमत के बारे में भी बातें हुई, तो क्या कहेंगे एपीसी कितना फ़ायदेमंद हुआ हमारे लिए? देखिए एपीसी अपोजिशन जमातों ने बुलाई और एक आईनी जो है वो एक तरीक़ेकार है। हुकूमत जब बनी थी 25 जुलाई 2018 को, तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सबसे बड़ी अपोजिशन मिली, और अपोजिशन चाहती है कि 5 साल पूरा इक़्तिदार जो है वो इमरान खान साहब पूरा करें। लेकिन बात ये है कि ख़ुद ये जिस किस्म का ये तसाब नहीं इंतकाम की मुहिम और जिस किस्म की गुफ्तगू जो है वो कौमी असम्बली के अंदर, या फिर इनके जो मैं समझता ही हूँ कि 100 से 500 लोग जो इन लोगों ने दिहाड़ी पे तनख्वाहों पे, और ये लोग जिनको अपॉइंट किया है सुबह शाम टॉक शोज के अंदर बैठते हैं और पिछली हुकूमतों पे जो तनकीद करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। अपनी 2 साल की इनके पास बेसिकली कोई प्रोग्रेस नहीं है, सिर्फ इन्हीं कामों के लिए रखा है कि पिछली हुकूमतों ने जो है वो चोरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, और इन्होंने जो है वो पूरे मुल्क का जो है वो कर्जे में जो है वो दबोच दिया, तूने ये किया, उसने ये किया, इस पे सारा मैं आपको बताऊं 2 साल से इनका यही काम है, यही रोना गाना है। इनसे पूछो 2 साल की आपकी प्रोग्रेस क्या है, तो आगे से रिस्पॉन्स होता है 0/0। पिछले अगर 2 साल पीछे जाए तो 47 रुपए की चीनी चोरों ने इनको दी थी, आज 105 रुपए की चीनी दस्तयाब है मार्केट में। फरिश्ते जो है वो नायाब मार्केट में आए हैं। पिछले साल 8 रुपए का यूनिट था बिजली का, वजीर आजम साहब कंटेनर में खड़े होकर कहते थे 2 रुपए यूनिट होना चाहिए, बिल जलाए गए। जो 72 साल में जो बिजली का यूनिट जो है वो 8 रुपए गया था, अब फरिश्ते आए, अब 18 रुपए के में मार्केट में मिल रहा है। 1 रुपया 54 पैसे अभी फिर ओगरा ने तजवीज़ दे दी कि और मजीद बढ़ाया जाए। पिछले साल तोला जो है सोना आपका 57,000 रुपये जो है वो मिल जाता था, अब 2 साल के अंदर फरिश्ते आए 1,17,000 रुपये पे तोला ले गए। पिछले साल डॉलर 116 रुपये पे था, अब 168 रुपये का डॉलर है जो फरिश्ते आए हैं। तो ये काम इनके वो है जो टीवी टॉक शोज के अंदर ये बताते हैं कि पिछले वाले चोर थे, और एपीसी बुलाने का मकसद जो है वो मौजूदा हालात के ऊपर जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं वो आके उस पर गुफ्तगू करती हैं, उस पर एजेंडे पे बात करती हैं। लेकिन हम जब भी अपोजिशन कौमी असम्बली के अंदर जब हम वहाँ अपनी जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, 3 तरीक़ेकार हैं। एक तरीक़ेकार अपने रिबन हाथ में डाल दें, दूसरा अपनी डेस्क बजाएं, तीसरा जो है वो आप जो है वो कौमी असम्बली को छोड़ दें। जब भी हम करते हैं कि बिजली महंगी, चीनी महंगी, आटा महंगी, चीनी चोर,
डॉलर महंगा, सीमेंट महंगा, बजरी महंगी। आप बिलीव करें इरशाद भाई कि रात को हमें एक नेप का लेटर जरूर मिलता है। मतलब यहाँ जो सूरत हाल ये है कि इत्तेसाब के नाम से जो अपोजिशन के साथ, अच्छा, और नहीं भाई ये बात भी समझ गई है रोज, मतलब ये जो है ना वो चीजें, मतलब उनका जो रेट है वो बढ़ जाता है, ये मसला भी है। रोज डेली आप हैं कि कम करेंगे, कब सस्ताई होगी, करेंगे, लेकिन होता नहीं है। दिन ब दिन चीजें बढ़ती जा रही है। देखिए, रियासत के अंदर जब रियासत हो और स्टेट के अंदर जब स्टेट बन जाए और कौम से जो किए वादे हुक्मरान और मदीने की रियासत का नारा लगाए, और जब कौम में जब आने लगे और 22 साल जद्दोजहद के बाद ये बात बताएं कि मेरा 100 दिन का प्लान मैं देकर आ रहा हूँ कि गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा। आज देखें कितने लोग गरीब बगैर इलाज सो रहे हैं। 100 दिन का प्रोग्राम, मैं गवर्नर हाउस गिराऊंगा, उनको जो है वो लाइब्रेरियाँ बनाऊंगा, PM हाउस गिराऊंगा, 100 दिन में यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख मकानात दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी करूंगा, आफिया सदीके को लाऊंगा। ये 100 दिन का प्लान है। फिर 100 दिन बाद जब अपोजिशन पूछे जी आपका 100 दिन हो गए पूरे, प्लान तो आपका कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर आप जब कौम से खिताब करें और कौम देख रही हो कि 100 दिन के अंदर कोई इन्होंने क्या किया है, और 100 दिन बाद जब वो कौम से खिताब करें और कहें कि हिटलर ने यू टर्न न लेके बड़ी गलती कर दी, तो सरकार तो आलम नबी पास फरमाते हैं बदबख्त इंसान जो झूठ बोले, बदबख्त इंसान जो वादा खिलाफी करे, जो अमानत में खयानत करे। सही बात। तो यहाँ जब शुरुआत ही झूठ से हो जाए, इब्तिदाई झूठ से हो जाए, तो उस मुल्क के अंदर फिर एंड क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? तो ये जो कौम के आई करा के पूरे पाकिस्तान को आई PTI आज लोगों की जिस तरीके से उन्होंने हुई निकाल के रखी है, आप यकीन करें कि लोग भी, अब बच्चे भी छोटे छोटे मासूम, उनकी चॉकलेटें, उनके बिस्किट, उनकी डब रोटियां जिस तरीके से महंगी हुई है, वो भी कहते हैं खुदाया पुराना पाकिस्तान लौटा दे, नए पाकिस्तान से हमारी तौबा है। सही कभी जिंदगी में नए पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। वकील साहब, इनकलाबी साहब, तव्हां छा इन ते राय ॾियणु चाहींदो? ॿीहर PTI खे मौक़ो ॾिजे न ॾिजे, आहे त वॾो वेल। असां सोचियोसीं पिए त नई हिकिड़ी पार्टी आहे, शायदि असांजो तव्हांजो भलो थी पवे। इन सोच जे आधार ते पाण तक़रीबन माण्हू सिंधी माण्हू ॾाढो सपोर्ट कयो पियो त तब्दीली ईंदी, ॾाढो सुठो भलो थी वेंदो। पर हाणे सभई माण्हू रोइनि था पिया ऐं बहरहाल मूंखे को माण्हू ख़ुशि नज़र नथो अचे। तव्हां छा राय था ॾियो हिन ते? असल में इमरान खान खे जेको वधि मां सपोर्ट कयो उहो यूथ कयो। नौजवान पहिरियों दफ़ो माना कंहिं पार्टीअ सां कंहिं लीडर सां बेहद जेको आहे उहो प्यार कनि पिया, गॾिजी बीठा ऐं हिनखे जाम सारियूं हिन उमीदूं जेको आहे नौजवाननि खे ॾिनो, वॾा हिन जेके ख्वाब ॾिना। पर जंहिं हिसाब सां ई आयो हिन 100 ॾींहंनि वारी जेका साईं ॻाल्हि कई, हुन खां पोइ वरी 100 ॾींहंनि खां 6 महीना थी विया, वरी चई भला 2 साल ॾियो मूंखे, 2 सालनि में तब्दीली ईंदी। हाणे वरी चए थो अञा 2 साल ॿिया खपनि। माना 4 सालनि खां पोइ तब्दीली अचे या न अचे, पर असांजो जेको मुल्क आहे उनजो त माना बेड़ो गर्क थी वेंदो, देवालो निकिरी वेंदो। जेको ग़रीबनि जी ॻाल्हि पाण कंदा रहूं त माना अॼुकल्ह त का बि सब्जी माना 100 खां घटि त मिले ई कोन थी। असल में इरशाद भाई मूंखे हिकिड़े दोस्त ॿुधायो, चई मां डेली जे हिसाब सां जेको आहे सब्जी या जेके सामान वठंदो हुउसि, त ईअं सुबुह जो उथियुमि, पेट्रोल जीअं महांगो, पेट्रोल महांगे थियण सां पाण पाकिस्तान में सभु शइ महांगी थी वेंदी आहे। जीअं महांगो थियो मां उन हिसाब सां वयमि, हुनखे चयुमि हीउ सामान खणी ॾे, त उहो चए पियो हाणे पैसा ॾे। चलो पैसा ॾिना, मां मुंहिंजा अधु खां वधीक माना पैसा खुटनि पिया। हाणे जेके रोज़ कमाइण वारा माण्हू उन्हनि जो छा हाल हूंदो? कंहिंखे बि कोन छॾियो आहे न। हिन माना जेको ॾियाड़ीदार मज़दूर हो उहो वीचारो सफ़ा फाका कशी ते अची वियो, हुन सां जेके सरकारी मुलाज़िम आहे उनखे जो ॾेवालो हिन कढाए छॾियो। सरकारी जेको ऐलान थियल आहे त जेकी पूरत आहिनि उन्हनि जी पघार 17,000 में बि कहिड़ो गुज़ारो थींदो? उहो कुझु नथो थी सघे। डेली जो हाणे ख़र्चो आहे 2,000 घटि में घटि, माना नॉर्मल सिंगल माण्हू जेकॾहिं फैमिली वारो हुजे त मां सम्झां थी त इलाही घटि आहिनि। मतिलबु अच्छा जतोई साहब, तव्हां मूंखे ॿुधायो, तव्हां जीअं चयो त इहो हिकिड़ो ॾाढो सुठो लफ़्ज़ बि चयव, इन्हनि हराम खोरनि खे पाण जेको आहे वोट न ॾियो, इहो अॼुकल्ह सुठो थी वियो आहे। सो तव्हां पाण कहिड़ा कम सुठा कया जो तव्हांजी नेकी पाण कयूं, या तव्हां बि इहे खीसे माना 2 खीसा त वारा अॻे ऐं खीसा पासे पैसा काथे रखिया? पर असल में इहो आहे, तव्हां पंहिंजे इलाइक़े में कमु करायो? मां तव्हांखे ॿुधायां हिकिड़ी अहम ॻाल्हि ॿुधायां। इहा अहम ॻाल्हि ब्रेक खां पोइ था ॿुधायो, इहा अहम ॻाल्हि वॾी हूंदी लॻे सुकून सां ॿुधाईंदासीं, वरी तफ़सील सां मूंखे जल्दी मां ॿुधाए वठां या वरी कंटिन्यू ज़रूर ईंदसि। नाज़रीन, हलंदासीं हिकिड़े नंढड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं, असां सां गॾु रहिजो। वी विल बी राइट बैक। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन जोड़े पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी
सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार ख़ुशि आमदीद ऐं तव्हां असां सां गॾु आहियो जुड़ियल आहियो तव्हांजी वॾी महिरबानी ॻाल्हि रहिजी वई हुई मंठार अली जतोई साहिब जी सो पाण पुछा कयूं पिया त पाण यूसी चेयरमैन बि रहिया त पाण कहिड़ियूं ख़िदमतूं आवाम जूं कयूं किथे केतिरा खां किथे लिकाया ने थोड़ा कुछ इरशाद के थोड़ा सा की खसी मची हुजण घुर्जे वही ख़ासि ॻाल्हि हुई जी पैसनि वारी असल में छा आहे त यूनियन काउंसिल जे चेयरमैन खे पैसा मिलंदा आहिनि 5 लाख रुपया उन मां तक़रीबन 1.5 खां 2 लाख रुपया पघारनि में वेंदा आहिनि 3-3.5 लाख रुपया बचंदा आहिनि जॾहिं मां यूनियन काउंसिल जो चेयरमैन थियुसि त मूं सोचियो त हीअ जेके मां थोरा नंढा वॾा कम पिया करियूं त जॾहिं असां लहंदासीं त माण्हू इहो ई सुवाल कंदा त भाई तोखे 5 लाख रुपया महीनो मिले काॾे विया पोइ मूं छा कयो जो हिकिड़ो नओं जेको ट्रेंड मां इहा पैगाम ॾींदुसि त ईअं जेकॾहिं थी वञे त असां जे हिन शहरनि में वॾो चेंज अची वेंदो जी जी साईं मूं छा कयो जो जेके पैसा मिलंदा विया उहे मां कापी में लिखंदो हुयुसि ऐं जेतिरा बि ख़र्च थींदा विया उहे बि लिखंदो हुयुसि उहो टोटल हिसाब किताब सॼो आख़िर जॾहिं असांजो टेन्योर ख़तमु थियो त मूं हिसाब कयो त छो त असांखे 5 लाख रुपया मिलणु शुरू थिया जुलाई 2018 खां जी साईं टोटली 26 महीना असांखे 5 लाख रुपया मिलिया आहिनि अच्छा उन खां पहिरीं असांखे मिलंदा 2 लाख रुपया अच्छा उहे 2 लाख रुपया तक़रीबन असांजा पघारनि में हलिया वेंदा अच्छा माना आवाम लाइ कुझु बि न थींदो मतिलबु थोरा के 10-20 हज़ार बचंदा या 30,000 जेके स्टेशनरी वग़ैरह ख़र्च थी वेंदा त उन वक़्त खां मां लिखणु लॻुसि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह मां 90 लाख रुपए जो कमु करायो अच्छा जेको माण्हुनि जे थ्रू करायो आहे अच्छा अच्छा जेको मतिलबु माण्हुनि जे फरमाइश ते उन्हनि जे इलाइक़े जे चङनि माण्हुनि जे चवण ते माना जेके उन्हनि खे सहूलियतूं खपंदियूं जेके नंढियूं वॾियूं वॾी त उन मां करे नथो सघिजे जो 2-2.5 लाख मां को वॾो रोड या रस्तो त कराए नथो सघिजे इहो थी सघे थो त मूं हैदराबाद शहर में मुंहिंजी वाहिद यूनियन काउंसिल आहे जंहिंमें अल्हम्दुलिल्लाह मां पंहिंजो ही कचिरे खणाइण जो सिस्टम मुतारफ़ करायो उन में 2 चिंची गाॾियूं वरितियूं ऐं उन्हनि ते 4 माण्हू विहारिया उन्हनि खे उन यूनियन काउंसिल मां पघार ॾिनी ऐं पंहिंजे सॼे यूनियन काउंसिल मां सफ़ाई ऐं डस्टबिन रखाया ऐं उन्हनि मां करायो हालांकि इहो बल्दिया जो कमु हूंदो आहे अच्छा बल्दियात याद है नईम साहब जो आने वाली इलेक्शन है बल्दियात की खास तौर पर क्या पोजीशन देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की आप देखिए बल्दियात का जो इलेक्शन है वो तो अभी लाजमी सी बात है आपका जो इलेक्शन सेल है और प्लस आपका जो इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है ख़ास तौर पे हल्का बंदियाँ और साथ में जो कराची की या सिंध की जो है वो तादाद जिस तरीके से इन्होंने बताई थी उसके ऊपर कुछ चीज़ें रिव्यू हो रही हैं उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला 1978 से लेकर कराची की अगर हम बात करें तो कराची में कभी भी जो है वो पीपल्स पार्टी मेयर नहीं कराची में बना 1978 से 12 साल मेयर जो था वो जमात इस्लामी का था जिसका नाम जो है वो आगा जमाली साहब उसका नाम था फिर फारूक सत्तार आया फिर जो है वो नेमतुल्लाह खान आया फिर उसी तरीके से मुस्तफ़ा कमाल आया फिर वसीम अख्तर जो है 4 साल का टर्नओवर पूरा करके कि अच्छे से पहले जितने भी मेयर गए उन्होंने कभी रोना नहीं गाया कि इख्तियारात के रोना क्या है बल्दियाती एक 2013 जब जो है वो सूबाई असम्बली में पास हुआ था तो यही जमातें थी ख़ास तौर पे उस वक्त जो है वो इक़्तिदार के अंदर भी थी कुछ अपोजिशन में थी इनका प्रेशर था कि बल्दियाती एक्ट आना चाहिए और जिनके जो महकमे हैं वो उनको महकमे दे दिए जाएँ महकमे 22 महकमे से तो जो मेयर कराची के पास थे और 22 महकमे कौन कौन से जिसमें से कचरा उठाना फिर इसी तरीके से अंडर बाईपासेस रोड फिर स्ट्रीट लाइट्स हो गई आपकी पार्क हो गए फिर ये कब्रिस्तान हो गए फिर आपकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो गई हैं फिर इसी से होर्डिंग बोर्ड हो गए फिर आपकी बहुत सारी ऐसी जो डेवलपमेंट की जो है वो चीज़ें जाती थी जो मेयर कराची के अंडर आती थी लेकिन होता ये है कि जब वो इख्तियारात का रोना गा के 4 साल बाद पेपर फाड़ के फेंक के चला गया और कहा मेरे पास इख्तियारात नहीं है तो इख्तियारात का रोना जो है वो 4 साल तक पूरी कौम को जो है वो समझ ये लें कि गुमराह करता रहा कि मेरे पास जो है वो इख्तियारात नहीं ये इख्तियारात बल्दियाती एक 2013 में इनको जो है वो डिलीवर हो चुके थे अब क्योंकि बात ये है कि इलेक्शन आगे होने कराची के अंदर जो मैंडेट है वो इस वक्त तरीके इंसाफ के पास है और कराची में जब इलेक्शन हुए थे पूरे पाकिस्तान में तो MKM का जो मैंडेट था MKM ने कहा जी हमारा मैंडेट चोरी किया तरीके इंसाफ ने कराची से और सिंध से
تو انٹیریئر سندھ سے، کیونکہ سندھ کا کیپٹل ہے کراچی، تو ان کی جو اس وقت اتحادی ہے، ان کی نفیس جماعتیں، انہوں نے ان پہ الزام لگا کیونکہ کراچی والوں نے اس دفعہ ایم کیو ایم کلاشن کوف سے باہر ہوئی تو ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں دیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے ایم کیو ایم کی. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ تحریک انصاف کا مینڈیٹ بنا اور انہوں نے واپس ان کر دیا آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ نفیس جماعتیں. کراچی میں میئر کراچی، ڈپٹی میئر کراچی، 4 ڈسٹرکٹوں کے چیئرمین، 200 سے اوپر یو سی چیئرمین، سینکڑوں کی تعداد میں کونسلر، پھر صدر پاکستان، پھر اگر بات کریں گورنر، 30 ایم پی اے، 21 میں سے 14 ایم این اے، ان نفیس جماعت اور تحریک انصاف کی، ان کی کراچی کے اندر جو ہے وہ اکثریت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کراچی میں اگر بات کروں تو ایک آنے کا انہوں نے کام نہیں کیا اور کام نہ کر کے آخر میں روتے ہوئے چلے گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اختیارات نہیں ہیں. تو الیکشن لازمی سی بات ہے وہ آگے ہونے اور الیکشن ہوں گے تو اب کراچی میں جو لوگ ہیں وہ سمجھ گئے کہ کس نے کیا کرنا ہے. جنہوں نے کام کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہی جیتے. تاں اچھا تھا سمجھو پانچے بارے میں تاں آنی بلا آئیو چیئرمین جے مقابلے میں یا نا؟ انشاءاللہ ماں جو کواسو الیکشن تھی بالکل حصہ وٹھندا سی بلدیاتی الیکشن میں جو اساں ماں سمجھا تو اسی خدمت تھا کریوں یا ماں جو کواسو الحمدللہ پنجے حلقے میں سٹھا کم کرایا ہن. اساں جے حلقے میں پہری ایم پی ایز ایم این ایز کھان کم کرایا اور یونین کونسل جی چیئرمین شپ میں کم کرایا. تو ہکڑی بھی خدمت ہے جی اللہ جی مخلوق جی خدمت کیوں تھا ان جو اللہ سائیں سیلو ڈے تو جیکا گال سائیں چئی تو میئر صاحبان چون تھا اختیارات کونن. تو ہانے ریسنٹلی اساں حیدرآباد جے میئر جو اجلاس تھیو اتے میونسپل کارپوریشن جو ان میں 3 ارب روپے جی بجٹ پاس تھی. یعنی 3 ارب روپیہ ہنن کے حیدرآباد جا ملن تھا سال میں وہ خرچ تھین تھا. کم چھا کرنو ہنن کے صرف صفائی کرنی ہے. پر تاں حیدرآباد کی حالت ॾिसंदो تو گند جو ڈھیر ہے. تاں 3 ارب روپے سالانہ خرچ کرو تھا ان میں تاں صفائی نہ تھا کرائے سگو. وہ 3 ارب روپیہ پنجے ہاتھ سے خرچ کرو تھا چو تھا اساں وٹ اختیار کونن کے. اختیار کیڑا مقصد تاں کے کچرو تاں کے ہی کھڑنو ہے انہی پیسن میں کھڑنو ہے یہی پیسہ خرچ تھین تھا. یہی پوزیشن کراچی جی ہے پیسہ خرچ تھین تھا بجٹوں خرچ کون تھین تھیوں باقی اختیار کونن کے اختیار دایو متا ہو جے کیڑی خبر. مجھے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. ابھی میں نے کچھ دن پہلے فیس بک پہ ہی دیکھا تھا کہ آگے آنے والی سردیوں میں ہمیں سوئی گیس کا بڑا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر گھروں میں گیس نہیں ہوگی اور اکثر میں سمجھتی ہوں ڈیفینس سائٹ پہ تو 3 مہینے جو سردیوں کے ہوتے ہیں 3 مہینے تک تو وہاں گیس ہوتی ہی نہیں ہے. اتنی بالکل لو جتنی ہوتی ہے. لوگوں نے وہاں پہ گھروں میں سلنڈر رکھے ہوئے ہیں. سلنڈر میں سمجھتی ہوں کہ پڑوسی ملک میں اتنا عام جام ہے کیونکہ وہاں گیس نہیں سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے وہاں گیس نہیں وہاں سلنڈر یوز ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ پاک نے ہمارے بہت ہی پیاری پاکستان زمین کے اندر اتنی گیس رکھی ہے, پیٹرول رکھا ہے, اتنی ساری چیزیں ہیں. اپنے ملک میں گیس ہوتے سراتے ہمیں گھروں تک وہ سروائیور کیوں نہیں ہو رہا. اس پہ کیا کہیں گے رحیم صاحب؟ دیکھیں یہ تو علمی ہے ہمارے اس ملک کے اندر. بات یہ ہے کہ جتنا گیس سندھ سے نکلتا ہے شاید کسی اور صوبے سے گیس نہیں نکلتا. جی پھر بات یہ کہ علمی یہ ہے کہ انگریز بغیر چپل کے ہمارے بلوچستان میں جن بچوں کو جن بھائیوں کو چھوڑ کے گیا تھا آج بھی بغیر چپل کے اگر گیس وہاں سے نکلتا ہے تو وہ لکڑی کے اوپر کھانا بناتے ہیں. وہاں گیس دستیاب نہیں ہے گھروں کے اندر. کے پی کے سے پانی یہاں کراچی تک پہنچتا ہے لیکن کے پی کے اندر جائے نا تو وہاں جا کے آپ دیکھیں لوگ کنوؤں سے پانی بھرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ سندھ کا بیسکلی جو حصہ ہے وہ کبھی بھی وفاق پورا نہیں دیتی ہے. نہ پانی کے جو ہے وہ حساب و کتاب سے جو ان کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ تھے اور نہ تو گیس کے حساب سے. کل ہی پوسٹ فیس بک پہ چلی تھی وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ایڈوانس میں بتا دیا کہ گیس کی شارٹیج ہوگی. تو نیچے کسی نے کمنٹ میں لکھ دیا کہ وزیر اعظم صاحب سے کوئی اچھی جو ہے وہ توقع نہیں رکھے, کوئی بھی ایڈوانس میں جو ہے نا بری خبر ہی سنا دیتے ہیں. تو گیس جو ہے وہ موجود ہے لیکن کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت محکمے جو اوگرا ہے جو اس وقت پیمرا ہے, پھر اگر بات کریں نیچے اور جو محکمے جو ان کا کام ان سب چیزوں کو دیکھنا. اب بات یہ کہ کے الیکٹرک کی ہم بات کریں, کے الیکٹرک کے اندر لازمی سی بات ہے وفاقی جو ہے وہ جتنا اس کا جو ریونیو ہوتا ہے جو ٹیکسز ہوتا ہے وہ وفاقی حکومت کو چلا جاتا ہے اور وفاقی حکومت کا ایک ادارہ ہے پرائیویٹ لائز ہے لیکن وہ حکومت کا ادارہ ہے. لیکن اب حالت یہ کہ اسٹیٹ میں ریاست کے اندر ریاست کے الیکٹرک کے جو ہیڈ آفس کے باہر ہے کراچی کے ان کے ایم پی ایم این اے وہ دروازہ بجا رہے ہیں. ایم پی ایم این اے دروازہ اور ہمارے پاس یہاں اختیارات نہیں ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کونسلر لیول کے آدمی کو اگر آپ ایم پی ایم این اے بنا دیں گے
تو اس سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ آپ کی گلی میں گیس پہنچائے گا, وہ بجلی پہنچائے صحیح گا, بات ہے, ٹھیک کرائے گا. یہی تو المیہ کراچی کے ساتھ ہوا ہے, یہ تو مذاق ہو گیا کراچی. یہ لگتا ہے کہ کسی انقلاب کی ضرورت ہے, اور انقلاب کی ضرورت کیوں ہے, کس طرح سے انقلاب لایا جائے, یہ انقلاب بھی بتا سکتے ہیں. یہ احمد نواز انقلاب یہ ستا ہی تھا, بل اتنے کے اتنے ہی آ رہے ہیں. سیکنڈ, اگر آپ سی گیس کے اوپر بات کریں تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ 700-800 روپے کا اگر وہ 3-4 کلو کا سلنڈر ہم فل کرواتے ہیں تو وہ تو 3 دن میں 4 دن میں ختم ہو جائے گا. ماشاءاللہ سے فیملیاں ہر گھر میں, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ 2 بچے 2 بیوی ختم ہے. اصل میں گیس واری جکا گال ہے ان میں یہ سندھ پاکستان کے 72% جو ہے وہ گیس دے تو اساں جو گیس ہے وہ اساں ॾिसूं था त असांजे ॻोठनि जे भर सां लाइनूं त वञनि थियूं वॾियूं, पर जेके असां उते भर वारा इलाइक़ा आहिनि उन्हनि खे बि गैस कोन मिलियो आहे. ऐं बार बार एहतिजाज कनि था, ऐं बार बार चवनि था, तॾहिं बि माना कोन. ऐं वापडा जी ॻाल्हि कयूं त तव्हां ॾिसो था सिंध में माना सिंध पाकिस्तान जो हिसो ई कोन्हे, सदाई असां वटि लोड शेडिंग, वरी सियारो अचे त इहो वरी गैस जी लोड शेडिंग असां वटि. जेके शयूं आहिनि असां वटि मालिक असां आहियूं, पर उहे असांखे इस्तेमालु करण जे लाइ कोन्हनि. असां रुगो ॾिसी सघूं था, बाक़ी इस्तेमालु हू ई कंदा. सॼियूं शयूं जेके आहिनि उहे असां वटि कोन्हनि. ऐं उन सां गॾोगॾु त साईं वारी ॻाल्हि त वज़ीर आज़म असांजो माना का सुठी ख़बर ॾेई कोन थो सघे, माना का बि अहिड़ी ख़बर ॾींदो जंहिंमें माना मायूसी कंदो क़ौम खे. त इन जे लाइ मायूसी चए तो घबराना नहीं है, मायूसी माना इहो लफ़्ज़ हाणे अहिड़ो ठाहे छॾियो अथई घबराना नहीं है, माना मायूसी वञो वरी का बुरी ख़बर ॿुधाईंदो, इहे चई वरी बुरी ख़बर. बड़ी अच्छी बात की कि सिंध के साथ जिस तरीके से रवैया सतीली मौला रखा हुआ है, उसका पता है वजह क्या? उसकी रीज़न ये 3 सूबे के अंदर जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ आई है. सुबह सिंध के अंदर जो हमारे सिंधी भाई हैं, जो हमारे उर्दू स्पीकिंग जो मेहमान नवाज गैरतमंद कौमें हैं ना, उन्होंने इनको आने नहीं दिया. आज इसका रिएक्ट क्या है, उसका रिएक्शन क्या है कि सिंध के अंदर जो कुछ हाल तद्दी दल ने जो कुछ किया, फिर अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान हमारे ऊपर इस वक्त पूरे सिंध के अंदर आया हुआ है. वजीर आज़म को जूं तक नहीं रेंगती कि बात ये कराची पैकेज लाल बत्ती के पीछे कौम को पहले 162 रुपये, फिर 1100 रुपये. सिंध बता दें, सिंध के अंदर जो है वो इंटीरियर सिंध में मीरपुर खास इस वक्त जो है वो आप सखर की तरफ चले जाएं, आप बदीन की तरफ चले जाएं, जो इस वक्त जो नगानी आफात आई हुई, कितना बड़ा पैकेज ऐलान किया है. क्या उनके साथ खड़ा हुआ है वजीर आज़म? क्या सदर पाकिस्तान खड़ा हुआ? ऐसा हुआ कि सिंध में से आवाज़ आई कराची से कि वजीर आज़म कराची से, सदर पाकिस्तान कराची से. चलें जी, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं. नहीं भाई, वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इस पे. बात को अपनी कंटिन्यू करेंगे. नाज़रीन, हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़. गुफ्तगू इलाही संजीदा थी वई है. तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल करे पंहिंजे मसइलनि जो हल बि मालूम करे सघो. मूंखे त लॻे थो हाणे विड़ी पवंदा थोरी देरि में सभई. तॾहिं त तव्हां ब्रेक था वठी वञो. हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़. ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं. सलाम से मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन. शहानी है अमन जोड़े पैगाम, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सुन. जी वेलकम बैक. तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चऊं था. सलाम सिद्धू मंठारली जतोई साहिब असां सां गॾु, एडवोकेट अहमद नवाज़ इनकलाबी नईम मेवाड़ साहिब असां सां गॾु आहिनि. कचहरी हले पई. मंठार साईं, भला इहो यूसी चेयरमैन जी हद ताईं महदूद रहंदो या को थींदो, को सीएम थींदो, को वज़ीर आज़म जे लाइ सोचो था? सोच त वसी हुजणो घुरिजे. छा ख़्याल आहे तव्हांजो? सर, पोएं दफ़े एमपीए ते मां बीठो हुउसि, पर पार्टी टिकट न ॾिनो. पोइ वरी फ़ैसिलो थियो कंहिं ॿिए जे लाइ, उन जे करे जेको आहे सो वरी थी वियो. लॻा पियो तव्हां पीपल्स पार्टी सां आहियो, कंहिं ॿी पार्टी सां आहियो? पीपल्स पार्टी सां. अच्छा, माशाल्लाह. सो हाणे इहो चेयरमैन पहिरियों भेरो थिया हो या हिन खां पहिरियां बि हुयो? मां पहिरीं नाज़िम हुयुसि. अच्छा. वरी 2005 में बि चेयरमैन जी इलेक्शन विढ़ियो हुउसि नाज़िम जी. हुन में 2005 में वरी पोइ अरबाब रहीम साहब जेको सॼी सिंध सां कयो, मूंसां बि थियो. पोइ हुन में असां बि सही. भला तव्हांजो माशाल्लाह हैदराबाद में खीर जो बि वॾो कारोबार आहे. असांजो खीर ॾाढो महांगो थी वियो आहे यार. हिन ते थोरो रोशनी विझी ॿुधायो त खीर जो छा मामलो आहे, छा मसइलो आहे? खीर किथां कीअं फ़रोख़्त थिए थो? छा वापारी छा कंदा आहिनि? हाणे वरी असां ताईं कीअं माना ॾुखियो पहुचंदो आहे? हाणे हींअर त सियासी हुयुसि कंहिं पार्टी सां, हाणे वरी कारोबारी थी. असल में इन में सॼो गवर्नमेंट जी पॉलिसी ठीकु न आहे. खीर ऐं अॼु ॿुधायां थो तव्हांजे हिन चैनल जे थ्रू त खीर जेका गवर्नमेंट जी पॉलिसी आहे न, जेकॾहिं इहा हली त ग़रीब माण्हुनि खे अनक़रीब 200 रुपए किलो बि न मिलंदो. हिननि जो तरीक़ेकार छा आहे? ब्रेकिंग न्यूज़ हले थी त बाबा खीर महांगो थी वियो. कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहिबान डंडो हथ में ॾियनि था एसीज़ खे, वञो वञी खीर खे रेट खे घटि कराए अचो. हू डंड था विझनि, जेल था मोकिलीनि. 5 सालनि खां खीर जो अघु वधणु नथा ॾियनि. हर शइ महांगी थी वई आहे. यानी
तव्हांजो असांजे जेके फार्मिंग आहे त उन में ईअं त न आहे न मेहनि खे रुगो पाणी पीआरे हुन मां खीर कढंदा आहियूं। सही। मेहियूं ज़ाहिर ख़र्च थियूं खाइनि, सही, दाणो खाईंदियूं आहिनि, उहे फीड खाईंदियूं आहिनि, उन जा ॿिया ख़र्च आहिनि, बिजली आहे, पाणी आहे, लेबर आहे, 100 ख़र्च हूंदा आहिनि। उहे सभु शयूं 4 गुना महांगियूं थी वियूं। हीअ चवनि था खीर खे महांगो न करियो। तव्हां ॾिसो पाणी जी बोतल 100 रुपए थी वई आहे सुठे हेस्टो होटल में वञो, हीअ चवनि था तव्हां खीर जेको आहे 90 रुपए किलो में खपायो। त नतीजो छा थियो आहे जो हाणे खीर डेयरी फार्मिंग जो जेको कारोबार आहे उहो पोयां पियो वञे। हज़ारनि जे तादाद, सवनि जे तादाद में फार्मर जेके आहिनि उहे वीचारा नुक़सानु करे पंहिंजा फार्म तबाह बर्बाद करे ॻोठनि में वापसि पिया वञनि। उन जे नतीजे में खीर मार्केट मां घटि थींदो पियो वञे। अच्छा, जेका शइ जीअं आबादी वधे पई खीर वधणु खपे। पर हिते 120 रुपए किलो आहे, ठीकु आहे, मुनासिब आहे असांजे हिसाब सां इलाही आहे, तव्हांजे हिसाब सां सही आहे न? असां चऊं था, असांजी मीटिंग्स थींदियूं आहिनि। अच्छा, डीसी साहब सां, मां डीसी साहब खे चयो, पोइ इन में क्राइसिस थियो, उन में 4-5 मीटिंग्स थियूं हैदराबाद में। मूं हुनखे चयो, मुंहिंजो साईं असां खीर तव्हांखे 70-80 रुपए किलो ॾियण लाइ तयारु आहियूं, पर तव्हां ॿियनि शयुनि खे त कंट्रोल कयो। तव्हीं चओ था असांजो हिन दाणे बों सां कंहिं ॿी शइ सां को बि असांजो वास्तो न आहे, सिर्फ़ु तव्हां खीर महांगो न कयो, बसि ॿी का ॻाल्हि ॿुधणी न आहे, खीर महांगो न कयो। इहा त पॉलिसी सही। अच्छा नईम साहब, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी नजर नहीं आ रही से होता है, मानव सां जुल्म, अवाम सां जुल्म था करनी। प्राइस पे कंट्रोल करना क्या किसकी जिम्मेदारी है, क्यों नहीं हो रहा इस पे अमल दरामद, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए बात ये कि 18वीं तरमीम के बाद प्राइस जो कंट्रोल है अथॉरिटी वो हर वो सूबा है, जो सूबा है वो जिम्मेदार है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। क्योंकि अभी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो उसके हाथ में सब चीज़ें पहले थी। जब वो कराची का कमिश्नर था, डीसी था, तो उसके जो जिम्मेदारियाँ थी या उसके अंडर जो डीसीज काम करते थे, तो होता ये था कि बात थी कि उस पर भी बड़ा तनकीद हुई कि एडमिनिस्ट्रेटर लगा लिया, ना उसने दूध कंट्रोल किया, ना उसने गोश्त कंट्रोल किया, ना उसने चीज़ों को कंट्रोल किया। ऐसा नहीं है। बात ये कि जब वो पार्ट ऑफ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी, जब हुकूमत सिंध ने उसको ज़िम्मेदारी दी थी, जितने चलान्स, क्योंकि अभी भाई ने भी, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि मैं कारोबारी तबके से ताल्लुक़ भी रखता हूँ, तो इन्होंने कहा कि हमारे चलान होते हैं, हमें जेल भेजा जाता है। जितने चलान और जितना जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कानून साजी या फिर जितने कानून या जितनी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी ने की थी, इतना शायद कि माजी के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन होता ये कि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि हमारी 10 जो है वो ऐसी जगह हैं जहाँ लाजमी सी बात है एक्सपेंस है हमारे। अब एक्सपेंस तो जब हम बाहर निकलेंगे, जब हम चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब बात ये कि महंगाई तो बेसिक से जो है वो बढ़ रही है। अगर बात करें, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जिस तरीके से इंक्रीज हो रही हैं, मैं लाजमी सी बात सारी चीजें उससे मशहूर हो जाती हैं, उसके साथ अटैच होती हैं, तो सप्लाई दूध की लाजमी गाड़ी ने देनी है। सही नहीं, मैं एक कॉलर मौजूद है, कब से इंतजार कर रहे हैं, अगर इजाजत हो तो ले लें। बिल्कुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अला नूर अली चांद जो सलाम कबूल पयदा साईं साईं वड़ी मेहरबानी स्टूडियो ताईं आवाज पहुंचायो नईम साईं। जी जी ठीक है। दानियाल साहब के बिरोई साहब के भी सलाम साईं, वड़ी मेहरबानी लख तोरा। प्रोग्राम ॾिसो पिया, कीअं थो लॻे प्रोग्राम? हाँ साईं, पानी के बारे में तव्हां पिया चओ, पानी सेहत लाइ तमामु ज़रूरी है, पर पानी न हुजे तो कुछ भी न हुजे। बिल्कुल सही सही था चओ। हाँ हीअं था चऊं त हिते बेलदार तो इंजीनियर छॾाए, थ्रेशर कीअं तो पैसा कमाए, वॾनि भोतारनि सां यारी हलाए, नंढनि खातेदारनि पानी तो बंदि कराए। इहो वण रिश्वत जो कीअं वठिजे, कहिड़े कहिड़े कहरनि ते बसि कलम खणिजे। सही सही, वॾी महिरबानी वॾी महिरबानी। पाणी साईं, पाणी साईं, पाणी कंहिंखे ॿोड़े छॾियो, कंहिंखे इतना सुठी आहे, के ॿुॾी आहे। सही सही, वॾी महिरबानी साईं, लख तोरा लख तोरा। अच्छा इनकलाबी साहब, हाणे त ॿुधो आहे त ईंदड़ जेकी मुस्तक़बिल जा सियासतदान थींदा, नंढे सतह खां वठी वॾी सतह ताईं, त तालीम जो हिकिड़ो शर्त बि रखियो आहे ग्रेजुएट, मुंहिंजे ख़्याल में त इहे तव्हांजे लाइ असांजे लाइ ख़ुशी जी नवीद आहे। अलाह करे त ईअं न अमल कनि, पर अमल कर थींदो कोन। ॻाल्हि सुठी कई अथनि त जेको आहे नौजवान, मां चवंदो जेको बलदियाती इलेक्शन थिए थी न, हुन में जेको तव्हां पार्टी बेस ते चूंड करायो था, इन में ई तव्हां जेको आहे पाण हुननि माण्हुनि खे हिकिड़ी जॻह था ॾियो। अहिल माण्हू न आहिनि, हुनखे टिकट था ॾेई छॾियो, पोइ माण्हू वरी पार्टीअ खे ॾिसनि था, हुन टाइम जज़्बाती थियो वञनि, फलाणी पार्टीअ जो आहे, पोइ शख़्सियत खे ॾिसनि ई नथा, ईअं बसि वोट हणी था छॾनि। त उहे माण्हू जेके अचनि था, उहे अहिल माण्हू नथा अचनि। इनखे तव्हां ईअं करे छॾियो, हिनखे पार्टी बेस ते न
कयो, इंडिविजुअल कयो, आज़ादु छॾे ॾियो माण्हुनि खे। पोइ जेके उन में तइलीम जो जीअं हाणे ग्रेजुएशन जो शर्त रखियो अथनि, ईअं रखो त जेके नौजवान आहिनि पढ़ियल लिखियल उहे ईंदा। नौजवान माण्हू जेको हूंदो उन में जज़्बो बि हूंदो आहे हिकिड़ो कमु करण जो। ऐं ॿियो असां वटि जेको वॾो बिगाड़ आहे न उहो इहो आहे, माण्हू चवंदा सियासतदान करप्ट आहे, सियासतदान करप्ट आहिनि, उन्हनि जो हिसाबु थिए थो। पर असां वटि जेको वॾे में वॾा करप्ट आहिनि न उहे ब्यूरोक्रेट्स आहिनि। ऐं नंढी लेवल खां वठी जेका आहे न उन्हनि जी करप्शन थिए थी ऐं उन ते केरु ॻाल्हाए बि नथो ऐं उन्हनि सां को उन्हनि जो हिसाबु नथो थिए। तव्हां हिकिड़ो SP ॾिसो, हुनजी पघार कुल लख सवा लख हूंदी आहे, पर उहो वीगो गाॾी खां सवाइ कोन थो हले, 40 लख जी गाॾी थो खणी हले। तुंहिंजी पघार ₹1,00,000 आहे, 40 लख जी गाॾी थो खणी हले, किथां थो मेंटेन करे तूं? उतां तुंहिंजी फैमिली बि हले थी ऐं तुंहिंजो एॾो सारो जेको ज़िलो तुंहिंजे हवाले आहे उहो बि कवर करे थो, सॼो कुझु इहो संभाले थो वञी उनमें। पर उन खां केरु पुछण वारो उन्हनि खां पुछनि ई नथा पहिरियों की बाक़ी असांजो को UC चेयरमैन आहे, उनजे करे ₹2 खाधा न, पोइ उन वटि नेब जो अची थो वञे। हाणे नेब त सिधो सो इदारो जेको आहे हिकिड़ो सियासी एहतिसाब जे लाइ धुर बणियल आहे। हुन माना जेको वफ़ाक़ में आहे, गुज़िरियल इलेक्शन में जेको वफ़ाक़ में नून लीग हुई त ॿियनि दावूं पिया कयूं, पीपल्स पार्टी वारा सभु दावूं पिया, हींअर वरी PTI आई आहे, हाणे नून लीग वारा रड़ियूं पिया कनि, असांजे ख़िलाफ़ पियो थिए। मुंहिंजो इन इदारे खे ख़तमु करे छॾियो। इन इदारे जी का ज़रूरत ई कान्हे जेको हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ तव्हां इस्तेमालु कयो। इदारो अहिड़ो शफ़ाफ़ इदारो हुजे जीअं हाणे हिननि एंटी करप्शन जो हिन सूबनि वटि आहे, उनजो हिननि ॿेड़ो ई ॿोड़े छॾियो। हाणे पीपल्स पार्टीअ जो माण्हू हुजे हुनजे ख़िलाफ़ एंटी करप्शन कमु कंदी छा? कोन कंदी न, हुननि जे अंडर में वेठा आहिनि, उहे MP MNA जे अंडर में उहे बदिलियूं पिया कराइनि। जेसि ताईं इन्हनि इदारनि मां सियासी मुदाख़लत न कढंदो न, तेसि ताईं असांजो हीउ जेको निज़ाम आहे इहो ईअं ई हूंदो। हिन में तव्हां केॾियूं सुठियूं ॻाल्हियूं कयो, सुठा था ख़्वाब ॾेखारियूं, इनकलाब जूं ॻाल्हियूं कयूं, उहे अमल कोन थींदो। अमल तॾहिं ई थींदो जॾहिं तव्हां नौजवाननि खे स्पेस ॾींदा, पढ़ियल लिखियल माण्हू अॻिते ईंदा, सियासी मुदाख़लत उन्हनि मां ख़तमु कंदा, तव्हां हुनखे शऊर ॾींदा, तॾहिं ई असांखे बहितरी सही मंठान अली सदुई साहिबु आख़िर में वेंदे वेंदे को असांखे सनियो को न्यापो को पैगाम ॾियणु चाहींदो? साईं मां पैगाम इहो ॾींदुसि त जेको आहे सो माण्हू सुठा चूंडियो ऐं वोट सोचे सम्झी ॾियो। ऐं उन खां सवाइ जेको आहे सो गवर्नमेंट इन में थोरी चेंज आणे। चेंज इहा आणे त यूनियन काउंसिलनि खे जीअं असां वटि छा आहे त असां वटि स्वीपर्स बि यूनियन काउंसिल वटि न हूंदा आहिनि, उहे हूंदा आहिनि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वटि। उहे पोइ असां वटि कमु कंदा कोन, उन्हनि खे पघार हुतां खणंदा आहिनि ऐं हू उते ₹5000 ॾेई पंहिंजी 25,000 पघार खणी वीज़ा ते आहिनि। इहे बि ईअं थो थिए न साईं, ख़राबियूं इहे ई थियनि थियूं न असां वटि। त इन्हनि शयुनि खे कंट्रोल कजे ऐं जेको चेयरमैन आहे उनखे पाबंद कजे त तूं अवाम खे माण्हुनि खे पंहिंजो हिसाब किताब ॾींदे। जेको बि माण्हू यूनियन काउंसिल जो तोखे वोट थो ॾिए उहो तोखां जेॾी महिल अची पुछे त बाबा हे पैसा केॾां विया, त तूं हुनखे हिसाब किताब कढी ॾे। सही नईम साहब आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? पैगाम यही है इस वक्त, क्योंकि जो सूरत हाल पूरे सिंध की जो बनी हुई है, इस वक्त हमें यकजहती की ज़रूरत है। बजाय हम तनकीद करें, तनकीद बराए असलाह होनी चाहिए। पूरे सिंध के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है और इमरजेंसी भी जो है वो सिंध हुकूमत ने नाफिज की हुई है। जितना बजट हमें दिया जाता है वहाँ से कराची हैदराबाद पूरा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ से कश्मीर फिर डेवलपमेंट के मामलात भी हैं। फिर इसी तरीके से जो हमारी NFC की जो रकूम है जिस तरीके से रोकी जाती है, फिर पैकेज के नाम पे जो गुमराह किया जाता है वो हमको। तो इस वक्त तमाम जो कौम है हमारी, मैं समझता ये हूँ कि हम किसी से वो भीख की दरख्वास्त नहीं करते, लेकिन खुदाया बिनती है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप यकजहती के साथ जो लोग सिंध के अंदर इस वक्त जो हारी है, किसान है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, लोग जो है वो दरबदर हो गए, तो थोड़ी सी अटेंशन वहाँ भी डाल। सही से इनकलाबी साहब आखिर में को सनियो आखिर में मां इहो ई पैगाम ॾींदुमि सभिनी पंहिंजे माण्हुनि खे, सिंधी माण्हुनि खे, त हिन वक़्तु जेके आहिनि हालात उहे तमामु घणा ख़राबु आहिनि। पंहिंजनि माण्हुनि जी सार लहो, हुकूमत जे आसिरे न छॾियो, पंहिंजा जेके तव्हांजा माण्हू आहिनि पाड़े ओड़े जो ख़्यालु कयो, पंहिंजे माण्हुनि सां प्यारु करणु सिखो, नफ़रतूं साड़ असद जेको आहे उहो ख़तमु कयो। ऐं सिंध में जेके क़बीलाई झेड़ा आहिनि ख़ासि करे उन्हनि खे ख़तमु करे प्यार मेट मोहबत पैदा करे। सही, वरी महिरबानी टिनी मोज़िज़ महिमान जी, बहुत शुक्रिया नईम भाई आपका भी। सो मरम साईं खां आख़िर में वेंदे वेंदे कलाम ॿुधंदासीं ऐं कलाम खां पोइ तव्हांजे लाइ वरी ख़ुशख़बरी बि आहे। ॿ मोकल अथव न तव्हांजे लाइ बि आहे। सो एक्स्ट्रो ॾियो त मोकलायो। जी बिल्कुलु, असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु हाणे 5 पुॼाणी ते पहुची वियो। इंशाल्लाह मंडे ते वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर हूंदासीं। तेसि ताईं पंहिंजो, पंहिंजे घर वारनि जो, जिन सां तव्हां मोहबत कंदा, जेके तव्हां सां मोहबत कंदा आहिनि, उन सभिनी जो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदा, मूंखे रखंदा पंहिंजी दुआउनि में यादि। ऐं जी इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो सदर फोटो सां गॾु। सो जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली, अल्लाह भाई। सुबह सुबह जो
पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सिंध